Okay, so I guess we are live. Uh, let's check the stream. Am I not live yet? Oh, okay, I got the notification. Did I get Mangalyam tantunane mama jiva he sharadam shatam Mangalyam tantunane mama jivanam sharadam shatam Oham dam sonia ve Oham dam sonia ve ओ हमदम शाम को खिड़की से चोरी चोरी दबे पावा है जा जीव तशी गुलाबाची कळी बघा हळदीला माकली आली गालीले तू तू चालली जपून जपून चालते जशी चांदणी जपून जपून चालते जशी चांदणी so this short URL service get original URL. So I'll wait for guys to join in and then I'll quickly explain what I have done till now and what's the plan for today. So bear with me, I'll tell you in detail. This is quite interesting. मुझे नहीं लगा था it's gonna be that interesting, but it is interesting. Okay, so let me quickly fix the basic things till now, and then I'll quickly explain you to the guide you into the project. I hope my audio is audible. I guess so. It is, yes. Uh, get original URL. I created this method. Yeah, get original URL repository and find URL by shortcode. Yeah, find URL by shortcode. So this was the earlier method that we had, and then let me just rerun and try कि at least this part is working. So URL shortener application rerun. Yeah, stop and rerun. And this is now not required. Repository URL controller. So shortcode. My DP is not turned on. So let me log into this. What's the password? Okay, I remember the password luckily. And then let's see what we have in this database. So use URL shortener database, then select star from URLs. Okay, so we have this URL hash and shortcode 123. So shortcodes are just 123. I have to like duplicate this request because I'm maintaining a collection. I don't want to write just this. So shortcode is 1. There is no authorization or body. We don't need body, so none. Okay. And then yeah, this is it. And 404 not found. Mm, let's go this here. Let's go this and this. Yeah. So till now I have like completed post API in the last stream.
Off stream, I did a little bit of error handling that I usually do from the last project, where I've figured out the correct pattern. If you really interested, you can look into that, but I can show you. This is kind of a global exception handler that I usually create. So it is basically really useful to show the error messages that we show on the screen. Okay. So for example, if you why this is showing this shorten copy, this is uh, get original URL. Okay. Here in this API, if you see, it's working. Okay, it will give us only two unless or until the URL is changed, because we are not going to add same URL again and again to our database. It is a wrong approach. So what I did, I have like uh, I'm just checking in the database if the current hash present, because we can't actually check on the long URL. So I have converted it to an hash URL hash and indexed on this. So we can just check if the current URL is present or not. Okay, and then after that, if suppose for example URL is wrong, for example if you provide you an invalid URL, so I want to have a validations check. So yeah, this is the validations that I have provided. Validation failed due to one or more fields, path shorten, and validation error, invalid URL format. Okay, so once we correct, and then it works. Now coming back to this, let me check the data in the URLs and why the shortcode didn't work. So if I enter the shortcode 2, it should give me the URL. It's saying 404. I'm not sure why, because it's a little bit different today. बापरे का गर्मी व्हायला लागली यार. ए गुलाबाची कळी बघा हळदीनं माखली. Okay, shortcode is 2. That is correct. There's null URL entity. Let me hit that again. हम्म, अरे URL रिपोजिटरी का मेथड क्यों आ गया यहाँ पे? Find URL control. Okay, that is correct. Hmm, let me hit that again. Okay, so step into, yeah, then next, yeah, original URL is present. So original URL is present. So let me evaluate this expression.
Let me copy this, and there is a way to evaluate an expression. Evaluate expression. Yeah, evaluate, and it's giving us this get URL view. Uh, it gave us. So why the heck it is? So next step. So original URL is this. Okay, is not equal to null, and response entity this build. So found build. Okay, why it's giving 404 not found error? Mm, this API call is giving it's something different because we are gonna send 301 and uh, 302. So found is HTTP status found code क्या होता है? So where is the browser? Browser is not open. Let me open a browser. So what's HTTP found code? 302 is found, and what about 301? About 301. Asli. Okay, so this is giving me 404 error in Postman. Why so? Hello, hello, bhai. Hello, Atharva. How are you? जादू मंतर लियाशी. Hello, hello, Krish GS. Is it your real name, Krish GS? I have to stop the debugging, it seems. Uh, yeah, there's some issue. The post method is working perfectly fine. It was a validation error that I gave, I tested it. But then this is giving 404, even though it's a simple API. You can disable redirect following in Postman to see uh, the raw 302 found response in the Postman setting. Yeah, because it's a redirect, automatically it will redirect as per the documentation that we were following. So let me show you the document as well. That it is a book. You know, it is a book from in the last time I showed you. It is a book by Alex Yu. System design book by Alex Yu. So this is the book. It is a very nice book, and in this one, luckily there is an example that he gave, which is the URL shortener, and in which he really explained how we have to speak up into the interviews, and what questions, the actual questions we have to ask, and what's the replies that we have to give, and how to build the system over here. Krishna, hello, welcome to the stream Krishna. भाई आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉक करना था, थोड़ा कॉलेज रिलेटेड, थोड़ा मैसेजेस आ सकते हैं 8-10. उसके पहले मुझे कुछ और पूछना था गूगल अकाउंट रिलेटेड. या श्योर, गो ऑन. अगर हमें पता होगा तो विल आंसर. First of all, guys, it's a drill. Whoever join first, you have to like the stream. You know, then and then only other people, other guys will know that we are live again. Okay, and this guy's up to something. So please do like the stream because you are the first hoppers. It will be really helpful if you like the stream. So please do that. Okay, and this is a really good book. I have posted the URL on the Discord server as well. If you wanna
look into the Discord server. Let me add the link to the Discord as well, because sharing the links from the subscriber or from the chat is not allowed. Hence, I created the Discord server. So you can check the URL of this book over there. Uh, it says get request short URL v1 short URL, return a long URL for HTTP redirection, and this location is what is the correct URL. So the postman doesn't show us the request uh, headers. These are headers 401, and we have to turn off the redirecting somehow. The anti-gravity gave us the way to do that. In the postman, open the setting, gear icon, general tab, automatically follow redirects. Yeah, don't follow the redirects. We wanna see. We'll build the quick front end for that using the React, but in the general HTTP, this request amount, max response size, SSL certification, SSL disable cookies, working directory headers, read files outside working directory. Bro, I'm 18 years old, CS student. I didn't started anything yet like coding, etc. Please, can you suggest us beginners what to learn, like what are the necessary things? Um Right now, for you guys to start, you must start with the C. Once you understand C, then you should move on to the C++ and eventually the OOPS concept, because C++ is nothing but the OOPS concepts foundation. So prepare and work on this foundation very well. C is must, C++ and OOPS concepts are must. If you do these things very clearly, very rightly, then whatever be the new language, you can quickly pick it up within 2 to 3 weeks max. तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा once you understand the C and C++. C is actually, it is very close to how machine works, and if you can talk or write in that same language how machine or computer works and talks, then it will be very easy for you to pick up any other thing. So work on the foundation. If you haven't started anything, start with the C, because in the first year of the college there is a book called Let Us See, which has been followed thoroughly. So yeah, let me find the option. कहाँ है वो option? कौन सा option बोला इसने? The general. Sorry for my voice ना, मेरा आज तबीयत खराब है. Turn off automatically follow redirects. कहाँ है automatically follow redirects? Automatically follow redirects. Yeah, turn this off and then let's send the request. Body. It's in the debugger mode. E debug. Yeah, continue. Just a second, I'll be back with the chatter. Okay, I wanna see. Okay, 302 found. And what about the headers? Yeah, location. This is a redirection that we want. Oh, nice. I have been working since so many years and I never used 301 or 302. And this location, wow, something new. ओके, व्हाट यथर वाज सेइंग, मेरा न्यू अकाउंट गूगल का, उसमें अनयूजुअल एक्टिविटी करके आईडी डिसेबल दिखा रहा है. रिकवरी का लिंक आएगा. गूगल बोलता है आफ्टर 24 आवर्स न्यू अकाउंट है लेस देन 10 days, एंड लॉग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म 60-70 times इन लेस देन 10 days. उसमें मेरा वाई चैनल भी न्यू वाला. ओके ब्रदर, थैंक्स. या नो प्रॉब्लम कृष्णा, प्लीज़ डू लाइक द स्ट्रीम यार. क्यों, मतलब हैक हो गया है क्या तुम्हारा अकाउंट? ये क्या बात हुई? न्यू अकाउंट है लेस देन 10 days एंड लॉग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म 60. तो इस पे जाओ, गूगल एक्टिविटी में जाओ, वहाँ पे चेक लॉग्ड इन डिवाइसेस और फोर्सफुली लॉग आउट फ्रॉम ऑल दी डिवाइसेस, ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, वो कर लो. और तुम्हारा करंट का जो है ना, उसमें लॉग इन रखना, प्लस चेंज द पासवर्ड. यही तो कम कर सकते हो, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं कर सकते. So I'll quickly push these things. So what all things I have added? Things I have done: added global
exception handler. Okay, added global validation handler method, uh, throwing required business exceptions. Okay, added standard API error response as well as API success response. These things I have done. So yeah, commit and push anyway. Yeah, push bro, push. uh, push failed, git denied. इसकी बहन का ये इंटेलिजे यार हमेशा बकचोदी पेलता रहता है पुश करते समय. यहाँ से हो जाता है वहां से नहीं करने देता वो. डिड आई मिस एनीथिंग? नो, नो हैक नहीं हुआ है, बस सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा था मेरे गूगल की सर्विस बंद है सारी, बस बाकी थर्ड पार्टी अकाउंट्स आर वर्किंग लिटल. कोई हैक नहीं है सेज गूगल क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट. मे बी यू हैव लॉग्ड इन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस और कुछ तो wrong activity that Google might have detected or wrongly detected, and hence it is giving it is taking your account under um, in investigation something. So log out कर दो बाकी सब devices में से. Just keep the one devices that you are using, maybe your phone or the laptop or maybe both. बाकी सब जगह से तुम ये कर दो उसको. ठीक है. फॉर इन डिटेल्स यू कैन आस्क टू चैट जीपीटी एज वेल. चैट जीपीटी बहुत अच्छे से हेल्प करता है इन सब चीज़ों में. मैंने मेरा शॉर्ट्स का क्या बोलते हैं स्ट्रीम कम्प्लीटली बंद कर दिया है बिकॉज आई डिडंट वांट द हॉपर्स, द स्ट्रीम हॉपर्स. Brother, actually I know C++ very well and I know Python little bit. I thought of learning Python from basics, but many of my friends are suggesting me to learn full stack web dev. भाई एक मैसेज पहले तुमने बताया कि you didn't know anything, you are just starting. So what should you start with? And I have seen many beginners start with the Python, and I'll never encourage anyone to do that. Python का गलत मार्केटिंग हुआ है. Python is easy to write a language but not easy to start working on with. Okay, it's not easy to learn. It's simple to write a code because इतना सारा code for example Java में लिखना पड़ रहा है. Python में it maybe it's like 2 or 3 lines of code. That's it. That's the advantage. Python is built using C, C++. So don't go with Python if you know C++ very well. अगर पता है तुम्हारा ये statement ही बोल रहा है कि as a developer I'm working since years, I'll be never able to say the statement the way you are saying, bro actually know C++ very well. कोई भी developer ऐसे नहीं बोल सकता unless or until you are not went that deep into that particular technology. I am working with JavaScript for years, some years, and still I can't say that statement because as you go deep, you know, oh, there are multiple things, multiple areas that people use different types of approaches in that. Even the language differs a little bit as per the use cases. So we know there are lot many things, and nobody can understand or get it complete hands on it. So if you are 18 years old and just first year, I'm thinking like assuming you are probably in the first year, so don't run up behind the things like full stack web dev, application development. Even these things will come within 1 or 2 years for you. Right now अब तुम कहाँ पे हो? अभी तुम फाउंडेशन बनाने वाले फेज में हो.
सो वर्क ऑन दोज फाउंडेशंस ना, क्यों तुम्हें आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे भागना है इतना। सी प्लस प्लस में कितनी सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट डीएसए है, डीएसए स्टार्ट कर लो। अगर तुम बोल रहे हो सी प्लस प्लस इज यू आर वेरी वेल, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सी प्लस प्लस। ChatGPT is you okay? Bro, just log out from all the other accounts. I'm telling you, just try this. If it doesn't work, then let me know. I was just waiting for your stream to start since morning. Oh, okay. You could have texted me on Discord. Uh, सारे अकाउंट से तुम लॉग आउट कर दो, क्योंकि मेरे को जो सिक्योरिटी इशू जो लग रहा है तुम्हारा ना, कि एक बार अकाउंट सब जगह से लॉग आउट कर दो और फिर से पासवर्ड चेंज करो, लॉग इन करो एक बार, एंड सी कि वो क्या इशू आ रहा है। कि अगर मल्टीपल जगह से लॉगिन का बोल रहा है तो मे भी हो सकता है कि तुम्हारा वीपीएन चालू हो कहीं से, लैपटॉप में क्रोम में एक्सटेंशन हो या मोबाइल पे, तो इट्स थिंकिंग दैट यू आर लॉगिंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल. Bro, actually I learned C++ in my 12th, but now I'm in engineering. I didn't started anything yet. Bro, I don't know very well, sorry for that, but a little better than Python. Python पे मत जाओ कृष्णा. अगर if you want an advice, I'll give you that advice. Python की तरफ देखो भी मत अभी फर्स्ट ईयर में तुम्हारे एटलीस्ट, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज ही इतना टफ होने वाला है तुम पे. तो अभी जो तुम्हारे कोर्स में है सी और सी प्लस प्लस, उसको बहुत अच्छे से करो यार. एक फॉरेन ऑथर का किताब आता है जो मैंने पढ़ा था, डू अ लॉट मैनी प्रैक्टिस ऑन सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस जितना अच्छे से समझोगे ना, उतना आगे जाओगे तुम करियर में, उतना फास्ट. सी और सी प्लस प्लस. पाइथन वगैरह तुम ये सी सी प्लस प्लस सीखने के बाद पाइथन तुम 15 दिन में पूरा ग्रैप करके एक्सपर्ट बन सकते हो उसमें, अगर तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर है. उसके बारे में सोचो ही नहीं कि बाकी दुनिया पाइथन सीख रही है, वेब डेवलपमेंट कर रही है, ये कर रही है, मैं कहाँ हूँ. भाड़ में गई दुनिया भाई, तुम अपना फाउंडेशन सही से करो. नो फॉर कॉलेज रिलेटेड एडवाइस आई वॉज सेइंग. आईडी का तो लगता है सही. हो जाएगा, मैंने मल्टीपल लॉगिन सेशन कर दिया. द जस्ट अलग लीड कोड गिटहब etc मल्टीपल टाइम्स. हाँ मे भी हो सकता है. कॉलेज वन इज़ लिटिल बिट सीरियस. कॉलेज का तुमने क्या बोला, मैंने मिस किया क्या? लेट मी रीड योर मैसेजेस अगेन. कुछ पूछना था गूगल अकाउंट रिलेटेड. मेरा न्यू अकाउंट गूगल का, उसमें अनयूजुअल एक्टिविटी करके आईडी डिसेबल दिखा रहा है. रिकवरी का लिंक आएगा, गूगल बोलता है आफ्टर 24 आवर्स न्यू अकाउंट लेस देन 10 days एंड लॉग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म 60-70 टाइम लेस देन 10. कॉलेज का क्या बोला तुमने? हाँ वही कृष्णा, मेरा वही कहना है कि भागो मत ज़्यादा. जहाँ हो अभी जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो. हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व करो सी प्लस प्लस में. हम्म, हो सके तो लीड कोड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देना सी प्लस प्लस में. मेमोरी एलोकेशंस ये सब कैसे काम करती है वो तुम सी से अच्छा कहीं और नहीं सीख सकते. तुम्हें अगर ये सब पता चलेगा ना तो बाकी चीज़ें बहुत आसान जाएगी तुम्हारे लिए. मैं वो किताब का नाम ढूंढता हूँ यार, मैंने बहुत ही अच्छी, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, मतलब मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल मतलब नॉन टेक में से हुआ था. तो मैंने जो किताबें रेफ़र की थी, दैट दैट सी प्लस प्लस बुक वॉज वेरी रियल फाउंडेशन बिल्डिंग फॉर मी. सो उसके बाद मेरे को कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं गया सीखने में. कहाँ थे हम? ओके. Path variable this. So I guess this is a done deal, it seems. Now the point is, एक वार्निंग दे रहा है, फील्ड शॉर्ट. अच्छा मे बी फाइनल. ओके फाइनल कर देते हैं, ठीक है. और क्या एरर वार्निंग दे रहा है अपने को? वॉइड. अरे ये गलत जगह नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं. और शॉर्ट कोड को भी अपने को वैलिड करना पड़ेगा क्या?
वैलिड तो अपने को इसका डीटीओ बनाना पड़ेगा ना वैलिड चेक करने के लिए. सो स्ट्रिंग शॉर्ट कोड. नो नो नथिंग मिसिंग. ओके ओके ग्रेट ग्रेट देन. गाइस तुम ये शॉर्ट यूआरएल शॉर्टनर को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, मैं ये देख रहा हूँ. दिस इज़ अ बुक. इसमें 5-6 एग्जाम्पल है और उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इन्होंने दिया है विच इज़ अ यूआरएल शॉर्टनर. डिज़ाइन है यूआरएल शॉर्टनर. ये पहले का टॉपिक थेरी है कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैशिंग वगैरह रेट लिमिटर इस पे, लेकिन पहला एग्जाम्पल ही डिज़ाइन यूआरएल शॉर्टनर है विच इज़ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंटरव्यू. सो यू शुड टेक दिस सीरियसली. भाई थोड़ा मुझे अभी इस टाइम कॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है डीएसए पे फोकस एंड स्किल बिल्डिंग. दैट वाई आई वॉज थिंकिंग टू डिले कॉलेज लिटिल बिट. विल ज्वाइन इन. नहीं 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 यार, कॉलेज डिले करके क्या मिलेगा तुम्हें. मैसेज कंटिन्यू. ऑलरेडी 1 ईयर गैप था 12 के बाद, फाइनेंशियल इशू. अभी सोच रहा हूँ कॉलेज और एक साथ. फाउंडेशनल बिल्डिंग प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है. इंटेंशनली गैप प्लान सोच रहा हूँ. नहीं नहीं यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम अभी इतने आसानी से ये गैप बोल रहे हो ना कि आई विल टेक अ गैप. जब तुम्हें फ्यूचर में जॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कभी भी, देर इज़ अ फॉर्म दैट यू हैव टू फिल. मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, ये एकदम सीरियसली सुनना. एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ डालना पड़ता है. अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो कहाँ कौन से कंपनी में किस तारीख को ज्वाइन किया और किस तारीख को छोड़ा वो भी मेंशन करना पड़ता है. अगर उसमें 1-2 महीने का भी गैप दिखता है ना तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट. और वो गैप बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता कंपनीज में, कॉरपोरेट में, तुम्हारे करियर में. सो आई टेल यू नेवर टेक अ गैप इन योर करियर. नहीं तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी हंट करता रहेगा. तुम परेशान भागते रहोगे उस चीज़ से कि यार मैंने क्यों लिया था गैप, क्यों लिया था, किसी ने क्यों बताया नहीं. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, प्लीज़ नेवर टेक अ गैप. कॉलेज चालू करो. तुम कभी रेडी नहीं होगे. जैसे तुम बोल रहे हो ना कि आई विल टेक अ गैप, मैं ये कर लूँगा, आई विल बी रेडी, तब तक तुम तब भी उसी सिचुएशन में होगे, वैसे ही कुछ माइंडसेट में होगे कि नहीं आई एम नॉट फुल्ली रेडी एट. कॉलेज स्टार्ट करने के लिए क्या रेडी होना है तुम्हें. कॉलेज करते करते तुम्हें और लोग मिलेंगे. सबसे अच्छी बात कॉलेज की ये है कि यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. अलग अलग टाइप के पढ़ाई करने वाले लोग, नई नई चीज़ें पढ़ते बताते डिस्कस करते. वहाँ से ज़्यादा सीखोगे तुम, ज़्यादा देन एक रूम में बैठ के तुम सीख रहे हो उससे. कॉलेज में जाके पढ़ाई क्लासरूम्स में कम और बाहर ज़्यादा होती है. तुम जाओ कॉलेज एक्सपीरियंस करो. कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. Brother, along with this learning, can you suggest us any online part-time job related to tech or anything so that it would help us to manage our daily expenses? ये तो मैंने कभी नहीं किया यार. मैंने इंटर्नशिप किया था हालांकि सीमेंस में किया था मैंने इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में लेकिन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी नहीं देते ना. देर इज़ अ रेलवे इंटर्नशिप दैट पीपल डू इन फर्स्ट ईयर के बाद. आई वॉज फ्रॉम मुंबई और मेरे लिए माटुंगा स्टेशन वगैरह बहुत नज़दीक था, तो लोग मेरे कॉलेज से बहुत लोग वो इंटर्नशिप करते थे. दे पे थोड़ा बहुत. विच इज़ इनफ फॉर यू. ओके, पे ऐसे मेरे को नहीं पता. और फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हो. मैंने कुछ समय के लिए फ्रीलांसिंग भी किया था अलग अलग वेबसाइट से. क्या नाम था उसका, फाइवर और ये सब. लेकिन उस पर भी तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलने वाला. सेम वन वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बट अभी भी थोड़ा फाइनेंस टाइट है. लाइक मैं ऑनलाइन कॉलेज कर रहा हूँ. ओके, उसका ऑफलाइन वर्जन सेम कॉलेज में 4 ईयर का है. सो सोच रहा था. ओके, ऐसा भी होता है, ये नहीं पता था मेरे को. अब इंटरनेट के बाद कॉलेज बहुत बदल गए. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ दिस ऑनलाइन कॉलेजेस आर वर्किंग. जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा हो जाएगा कॉलेज, और ये चीज़ एक फिट नहीं बैठ रहा एक टाइम पे जस्ट फॉर दैट.
कौन से कॉलेज में तुम वैसे अथर्व? ये ऑनलाइन कहाँ से पैसे कमाए ये मेरे को ज़्यादा पता नहीं है यार दोस्त कृष्णा। ऑनलाइन पार्ट टाइम इंटर्नशाला पे लोग इंटर्नशिप ढूंढते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अभी कितना वैलिड चल रहा है वो। उसको क्या नाम दे? शॉर्ट गेट ओरिजिनल URL DTO। ओके, एंड इसमें वी हैव टू लाइक प्राइवेट string short code. Okay, and this won't be okay, and we have to use this DTO. जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा चेंजेस कर लूँ। और मेरे को कैशिंग अभी ऑन स्ट्रीम सीखना है, मैंने कैशिंग यूज़ नहीं किया है, सो आई हैव टू डू दैट। वी नीड टू ऐड डबल शिफ्ट एक्शंस गेटर्स, ऐड गेटर एंड सेटर। ठीक है, सेटर नहीं चाहिए, और प्राइवेट स्ट्रिंग सेट कोड नहीं चाहिए अपने को ना, ओनली गेटर। सो गेट ओरिजिनल URL डॉट गेट शॉर्ट कोड। ठीक है, void, and why it's crying bro, don't cry। ओके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ओके, अभी ज्वाइन नहीं करा है, लाइक सही में कोई गैप में गेमिंग या एंटरटेनमेंट एकदम नहीं। विल फोकस ऑन DSA एंटिल देन, थोड़ा जावा पे दिमाग लगा करके फोकस करूँगा फर्स्ट सेम थोड़ा। नहीं यार, मैं कभी कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कि तुम गैप लो। तुम्हें बाकी सब चीज़ें करते करते भी टाइम मिलेगा ये सब करने में, अगर तुम्हें सच में करना है ना, तुम सारे चीज़ कॉलेज वगैरह के साथ करोगे। गैप आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू अवॉइड, कभी भी गैप मत लेना लाइफ में। जस्टिफिकेशन के लिए लाइक प्रोजेक्ट्स और स्किल्स भी लाइक 6.5 मंथ्स का टाइमलाइन है। फीलिंग दिस नहीं नहीं, तुम नहीं ऐड कर सकते दोस्त उसमें। वो जो वेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले हैं ना, पट से पकड़ लेते हैं तुम्हारा। 15 दिन का गैप मेरे को एक बार जस्टिफाई करना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज स्विचिंग जॉब्स इन बिटवीन। 15 दिन का गैप मेरे को जस्टिफाई करते करते मेरी लंका लग गई थी कि क्यों। मेरे कंपनी में पूछा कि क्यों, मेरे को डर लगा था कि बाकी यार मैंने दूसरे कंपनी में ना बोला इसमें ये ना हो जाए। गैप मत लो भाई। ब्रदर आप कहाँ से हो? मैं अभी पुणे में काम कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन मुंबई से हुआ है, मुंबई VJTI, इफ़ यू नो दैट कॉलेज, एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन पुणे। गैप मत लो अथर्व, और भी अभी भी तुम्हें लगता है तो इट्स योर चॉइस, बट आई नेवर नेवर एनकरेज समवन टू टेक अ गैप। लेट मी टेस्ट दिस थिंग, stop and rebuild without the debugger. And how can I test this validation? So I'll just have a slash and it should show me body not found. Yeah, timestamp status, but it's not a error, that is our custom error. uh, सो वी नीड टू ऐड दिस मेथड। अभी मैं फिर से नहीं लिखूंगा, मेरे पास है लिखा हुआ कि हैंडल जेनरिक एक्सेप्शन इन केस जेनरिक एक्सेप्शन अकर्स, I need to use this generic exception. So in my global exception handler
here I have one for validations and one for this. So this is API error response. API error response, API error response. I don't have logger yet, so no logger this time. And then this. Okay, and I have to specify this non null, then it will stop crying. And then there is global validation as well. Handle bad credential, handle disable no. So let me rerun this, stop and run this, and let's see. whether where are you from मैंने बोला शायद. But are you getting my point a little? Like 18-19 hours आराम से चले जाते हैं. I can handle college, but finance is again not very good. Even college बीच में रुक भी सकता है, इसीलिए सोचा ओके बफर बना के थोड़ा तब ज्वाइन कर लूँ. Okay, how much is the fees? Because of the fees you are like struggling or thinking about that? इंजीनियरिंग कॉलेज इतने महंगे हो गए क्या आजकल? डोंट यू हैव एनी स्कॉलरशिप? इफ फ्रॉम विच स्टेट यू आर फ्रॉम? आई गेस यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश. स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं होगा? स्कॉलरशिप होता ही है ना कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए? या दिस इज आवर मैसेज, वैलिडेशन मैसेज. Okay, added this generic message. So now I have to start to think about mm, इसका गिट बहुत ही अलग है यार. Added for unknown errors and added get get original redirect URL method. गुलाबाची कळी बघा हळदी न माखली. Oh, I missed some messages. But are you? Yeah, मैंने बफर बना कि यस. लाइक आपने लोगों को देखा होगा जैसे बहुत लोग कॉलेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहते उस टाइम कॉलेज ऑनलाइन में फीस भी कम कम और सिलेबस बोल सकते 60% रहता है कंपेयर टू. अच्छा, ओके ओके, ये नहीं पता था मेरे को. ये सब चीज़ें बदल गई है ना अभी. ओके ब्रो, आई एम गोइंग टू लीव नाउ, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम अटेंडिंग someone's live stream and texting them. Thank you for suggestion and tips. May you achieve success on what you are working. Oh, thank you so much, Krishna. Now back to the caching. Now I need the help from AI to teach me caching. गुलाबाची कळी बघा हळदी न माखली. जैसे सेम कॉलेज में सेम डिग्री जस्ट 4 इयर्स, 4 इयर्स है और उसी का ऑनलाइन वर्जन 3 इयर्स का. ये अच्छा, ओके ओके, ये तो फायदे का सौदा है ना. मैं तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह तो मिलता होगा ना, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है हर जगह.
सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि अगर वो होगा तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ना। और yo bro, I'm I'll now start about the caching. I really don't know what we have to exactly cache or anything because इस book में भी उन्होंने नहीं बोला है. The writer haven't mentioned about the caching. Uh, so this part is done. Location redirection 302 that we are sending. This is done. URL shortening is done. Nothing about the caching. So let's take an help from ChatGPT now. Teach me better, brother. URL shortener. Okay. ये मैंने पहली बार ही सुना था वो कि ये सब ऑनलाइन. This we have handled hash value and hexadecimal. So in our database, yeah, it's there. गुलाबाची कळी बघ हळदीनं माखली. Okay. Now I have trained this, so I have to ask. Now tell me about the caching architecture here. Where and why do I exactly need this caching? The one I'm guessing is कि अगर from the front end, if user makes this call like give me the this URL, so internal server error. Okay, I'll look into this. ऑनलाइन में तो नहीं, मतलब पैसों की प्रॉब्लम है नहीं. जस्ट फैमिली क्रिएट्स आर्टिफिशियल chaos. I think you are getting it like they are focusing on buying things and use money for not importance. Yeah. ओके, फैमिली वाला ऐसा इशू है तुम्हारा. उसको इसको मैं फ़िलहाल वो अपना एरर फिक्स करने के लिए मैं दे देता हूँ because I need to read about this. Gate is giving this error. Why? Meanwhile अपना जो फोकस है आज का which is this. You need caching only for redirect API. Yeah, get API. That's what I thought about because this will be again and again. Yes. Browser Spring Boot Redis cache if miss database slow. User opens ABC123, check Redis if exist. If yes, redirect immediately. If no, fetch from DB. I'm used to, मुझे आदत है वैसे ऑनलाइन की. 10th में ऑनलाइन था और 11th एंड 12th तो फुल ऑनलाइन करा हूँ. ओके, इतना सब ऑनलाइन हो रहा है आजकल. करा है. हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स लिटिल. देन नाइस नाइस. Go ahead, but avoid taking gap. I am again telling you this. Okay. Don't create. So caching saves repeated DB calls and makes redirect faster. Don't cache create API. Don't cache validation. Don't create cache response wrapper only. Short code original URL. Later you can add Redis here. Get original URL. Check Redis if found return else DB lookup. Okay. ओके मेरी आवाज़ एकदम ही ख़राब है यार. बोलने में दिक्कत हो रहा है. रेडिस कैशे देखे क्या एक बार क्या है. रेडिस कैशे
Redis cache Spring Boot का Spring Data Redis provides an implementation of the Spring's framework cache uh, abstraction. In this, the package to use Redis as backing implementation, add Redis manager to your configuration as follows. Redis cache manager, Redis cache builder, connection factory, cache defaults, transaction aware with the initial. अगर ये सिंगल एप्लीकेशन होगा ना, मतलब सिंगल सर्वर एप्लीकेशन होगा तो अपने को रेडियस की भी ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. ये तब ज़रूरी पड़ता है कि व्हेन वी हैव छोटा छोटा माइक्रो सर्विसेज and request is coming through the load balancer and is going through either of the server. So in that case, we don't even have to go to the server. We just check the Redis in between, check if it hits, then वहीं से request response वापस जाएगा यूज़र के पास. But अगर नहीं तो वो load balancer के through specific server में जाएगा request. So this is what my current understanding is. And single server के लिए Redis इतना कुछ important नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, लाइक बिलियंस ऑफ रोज है बन गई है, देन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है सिंगल सर्वर के लिए. मेरे कुछ पर्पस भी है, दे आर क्रिएटिंग इन, मेरे कुछ पर्पस भी है, दे आर क्रिएटिंग हिंडर्स इन द वे ऑफ इट, लाइक. अच्छा, okay, usual family issue. Yeah, every most of the people goes through it and tries to give no money, even take saved money from me. So, how much is your college fees, bro? Atharva? Redis cache manager. Okay, as shown in this. So, as per the chat GPT, it's saying just create this connection. That means create a simple hashing or hash map of the short code and original URL, and then because it's a single server we can so only cache without Redis. I didn't understand actually. There are multiple ways of caching. Just variable level का भी caching होता है जो तुम्हारे life cycle तक सीमित रहता है. Maybe in the front end you wanna store some user का role or user का some कुछ और कोई भी XYZ thing, so you can have it in a variable. uh, for example API response of users some data, उसको हम कोई वेरिएबल में स्टोर करेंगे, अगली बार जब भी नेक्स्ट पेज पे उसको चाहिए तो विल यूज़ दैट वेरिएबल. ये एक सिंपल सा हालांकि ऐसे यूज़ नहीं होता बट ये सिंपल सा कैशिंग का एक एग्जांपल है. अथर्व यू पिंग मी ऑन डिस्कॉर्ड इन डीएम्स, इन डीएम. ओके, मे बी आई कैन हेल्प यू इफ पॉसिबल कहीं पे प्लान बनाने में तुम्हारा. Thinking of building a real-time cafe management system with QR ordering, inventory, billing, analytics, and WebSockets in Go. Good resume project or too common? नहीं 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 नहीं. It's a really good, nice resume project. Common projects से mostly resume में आते हैं. That is good. Not sure about the Go, but yeah, this is a nice project and widely used. और बहुत सारे डेवलपर्स इसको बना के पैसा कमा रहे हैं, पता है. द लोकल शॉप्स एंड ऑल यू कैन टारगेट. आई हैव सीन one of my friend did this actually. He created this system, simple system for a good restaurant and it worked. He got paid. So yeah, this is a nice idea, Ravi. जैसा
जैसा पैसा मिल तो जाएगा, लेकिन लेने टाइम वेस्ट करो फिर पूरा डिबेट करो उतने टाइम में मैं दो तीन डीए से टॉपिक करूँ ढंग से, मतलब एडमिशन ले लूँगा। उसके बाद भी मेरा कुछ प्लान था, उसमें पैसा लेने थे। दे agreed before but they change every 4 days, they are like this from here, I'll do that। वैसे भी मैंने देखा है आपने I'll do that, वैसे भी मैंने देखा है आपने यहाँ कोई यूज़ नहीं कर रहा है ऐसे भी। क्या? अपने यहाँ कोई यूज़ नहीं कर रहा है ऐसे भी। I'll do that anyway, I have seen that no one is doing it here, yeah, yes। हाँ करो, अगर तुम्हारे कॉलेज में भी कोई नहीं कर रहा है तो इट्स गुड, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इफ़ यू आर, आई नो यू हैव क्वाइट, यू आर क्वाइट गुड एट इट, बट जब भी कोई अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो कीप इट मिनिमल, द स्कोप की ट्राई टू कीप द स्कोप एज मिनिमल एज पॉसिबल, उतना बना लो, उसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट करते जाओ। एक बार फाउंडेशन सही बन जाएगा तो उसके बाद तुम और बेटर चीज़ें कर सकते हो। I don't know about Go, bro. Some people say Go is not that good. Some say Go is too good. They are like this from a year. ये फैमिली इशू तो यार होता ही है फैमिलीज में ना, यू हैव टू गो थ्रू इट, ये सब मोह माया से, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं यार। या दिस वेरिएबल कैशिंग, दैट व्हाट आई एम सेइंग, फ्रंट एंड में भी ऐसे ही है तो बैक एंड में भी। कोरियन हेयर स्टाइल किए, तेल लगाया भाई मैंने बालों में, मेरा वो हेयर बैंड नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैंने तेल लगाया था और आई केप्ट इट लाइक दिस। बहुत ज़्यादा ही तेल हो गया शायद, तो सैटरडे सो आई थॉट तेल लगा दूं कोरियन हेयर स्टाइल। बट आई हैव माई बेस्ट बीस्ट माई लैपटॉप में टूल, यस लैपटॉप इज तो Go is good while learning Rust also, both are goated। You are in a different league then brother, Go and Rust। उसके बहुत सारे जॉब्स भी है यार, लेकिन मैंने देखा है Go and Rust or Ruby on Rails, there are very specific industries which use these things। If cache contains this, ये तो सिंपल सा उसने बनाया कि मैप बनाओ और means store the data inside your Spring Boot app RAM using HashMap। Yeah, cache gone। तो क्या करते हैं, विल मेक अ प्लान। सो पहले वेरिएबल कैश इंप्लीमेंट करते हैं। अब बाल बहुत जाने चालू हो गए क्या, भैंचोद। So what we will do, we will first uh, implement variable cache, which is nothing but a hash map। Okay, hash map, which means short code. Every short code will have its original URL stored, whichever is hit already, original URL, ठीक है, ये रखेंगे। Then we'll convert this to Redis cache, because this has some issues. If server restarts, then cache is gone। Okay, अगर what else can be a disadvantage of this local caching? Not too much space, not too much space here, and not will not work, will not work with microservices। तो ये सब इश्यूज हैं इसके।
तो देन वील मूव टू रेडिस कैशे, ठीक है। ये पहले कर लेते हैं जल्दी से, एक हैश मैप करके, तो अपना कैशिंग अपने को दिख जाएगा कैसे बिना रेडिस के यूज़ हो रहा है। देन वी विल यूज़ द एक्चुअल रेडिस कैशे हियर। रेडिस कैशे का कोई साइट था यार, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है। रेडिस कैशे। गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार मीनवाइल। व्हाट डिड आई मिस? मैंने सोचा था जावा बैकएंड करूँ, बट गो करने लग गया। होप सो इसमें मिल जाए जॉब। डोंट वाना रिग्रेट दिस, यू विल नेवर रिग्रेट एनी लर्निंग डिसीजंस। पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी ब्रो। आज लाइव को एडवांस में रिकॉर्ड करा है, डे 3 स्ट्रीम करने एल्गोरिदम्स। आज एक और चीज़ हुआ, यूजुअली आई गो टू डॉक्टर्स विल गार्डियन एवरी टाइम टुडे आई गॉन टू डेंटिस्ट अलोन एंड गेट फिक्सचर of gum pocket. Okay, what's your age, Atharva? What's your age? 16 17 years old you are, Sims? It's fine यार। तो और देखो रवि, चालू करो। बाकी क्या होगा क्या नहीं, भांग भोसड़ा बाद में सोचने का। चालू करो, बनाओ। बनाने में जो मज़ा है ना, ये सब चीज़ें वो एंजॉय करो। उसके बाद देखो जॉब होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये सब रंडी रोना पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये। एंजॉय द प्रोसेस। अच्छा मैं यहाँ पे था ना। वुड यू लाइक टू change this to original URL, replace this and force. अच्छा, there is some issue. I have updated global Java to print the exception stack trace. If you check the IDE terminal console right now, you should see the exact, let's see the exact stack trace. And then what else? If you check the original URL stored in the database ID2, it contains unscaped spaces in the path. In URL controller.java, we are trying to redirect using this. Why this fails? Java URL create strictly validates the format a literal space. Acha, because our original URLs has the space. वेरिएबल वाला कैश इज टू फास्ट दो, रेडिस में भी टीसीपी की डिपेंडेंसी आ जाती है। हाँ ट्रू, बट बैकएंड में वेरिएबल कैश का कोई मतलब ही नहीं है अगर तुम्हारा प्रोडक्शन ग्रेड का एप्लीकेशन है। मे बी इफ़ यू हैव माइक्रो सर्विसेज देन, और लोड बैलेंसर तुमने इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो दिस इज़ योर लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ये तुम्हारे सर्वर से अलग अलग, फॉर एग्जांपल, ठीक है। these are multi servers and then user is sending the request। तो ये रिक्वेस्ट पहले कैशे में जाके चेक होगा, तो तुम्हारा ये सर्वर पे जाने का काम ही नहीं होगा ना, यहीं से वापस जाएगा। तब उस केस में ये फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा एक ही ये सर्वर है, कोई लोड बैलेंसर नहीं है बीच में, और डायरेक्ट यूज़र यहाँ आता है, तो यहाँ पे रेडिस कैशे रखने का ऐसा कोई खास फ़ायदा नहीं है। बट इट इज़ जस्ट अ लर्निंग पर्पज़ कि उसमें कुछ फ़ायदा हो जाए। रेडिस में भी टीसीपी डिपेंडेंस का पता, लव द एनर्जी थॉरफिन मोटिवेशन, या फ्रंट एंड में है। हाँ फ्रंट एंड में भी वेरिएबल कैश, वेरिएबल क्यों नहीं है, कर सकते हम। मैं तो मोस्टली यूज़ करता हूँ कि एक, देखो देर आर मोस्टली सच यूज केसेस कि तुम्हें ग्रिड में डेटा दिखाना होगा फ्रंट एंड में, ठीक है। ग्रिड का डेटा एपीआई से डेटा आएगा, एपीआई डेटा देगा जो भी डेटा है, तो वो एपीआई डेटा को एक कोई वेरिएबल में फ्रंट एंड में स्टोर कर दो, क्योंकि वो डेटा चेंज होने वाला नहीं है। इफ़ यू नो दैट डेटा इज नॉट गोना चेंज फॉर लाइक 15-20 मिनट्स और डे और समथिंग, कीप इट इन अ वेरिएबल। जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो पूरा पहला पेज क्यों तुम्हें फिर से लोड करना है। जो एपीआई रिस्पॉन्स आया उसको दिखा दो जो तुम्हारे पास है। कोई लोकल स्टोरेज में करता है, सेशन स्टोरेज, या कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं। वो बेसिक्स है, मतलब वो सर्वर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक लाइफ साइकिल में ही ख़त्म हो जाता है उसका। तुम्हारा ब्राउज़र का टैब क्लोज, वो डेटा गया वैसे।
रिफ्रेश के बाद भी डेटा रखना है, देन देर इज ऑल्सो वन मेथड कि रिफ्रेश के बाद भी वो होता है. देर आर थ्री लेवल्स ऑफ कैशिंग यू कैन इम्प्लीमेंट. वन इज लाइक रिफ्रेश पे ख़त्म हो जाएगा. दूसरा तुम मैप और इसमें उसको कहीं पे स्टोर कर सकते हो, और लोकल स्टोरेज में, कोई स्टोरेज में शायद स्टोर कर के उसको यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ सेकंड लेवल कि वो तुम्हारा रिफ्रेश के बाद भी रहेगा. और देर इज़ वन मोर जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. एज बॉर्न 19 क्या है? एज 19 फेब में हुआ. एज 19 फेब में हुआ. ओ ओके. तुम लोग शायद ये ज़्यादा एंजॉय करते हो लीड कोड वगैरह ना, ये सब ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हुए दिख रहे हो मेरे को. बहुत गर्मी हो रहा है यार. Okay, so there are spaces clearly in our URL. So URI, location URI. So we have to do this location URI dot create original URL dot replace, because there are spaces. ये तो हमने सोचा ही नहीं है. Space, और इसको URL में रिप्लेस होता है. तुमने गूगल के इसमें भी देखा होगा, गूगल सर्च में. So it gets replaced. Okay, so let's restart this. Let's hit. फिर से error. Required URI template get original method parameter is not present. Handle missing value. गुलाबाची घडी बघा हळदीला माती. I am a beginner buddy, your code is on another level. वो बोलते हैं ना, वो अलग ही. ये बिगिनर लेवल का ही कोड है. अगर तुम जावा में होते तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग्स. मैं भी स्प्रिंग बूट में बिगिनर ही हूँ भाई, तो वी आर सेम. इसकी माँ का. मिसिंग वेरिएबल एक्सेप्शन क्रिएट ब्रेक पॉइंट, ये कहाँ आ रहा है? गेट URL DTO फॉर मेथड इज नॉट प्रेजेंट. गेट ओरिजिनल URL DTO इज नॉट प्रेजेंट. गेट गेट ओरिजिनल URL इज प्रेजेंट. Why it's saying not present? Oh, okay, okay, okay. Get short code. सही तो है. What's wrong? संकेत पाटिल, hello, hello bro. Welcome to the stream. आई एम चेकिंग आपके, मैं वीडियोस और शॉर्ट्स चेक कर रहा हूँ. धीरे 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 जावा में जंप करूँगा तब शायद घुसेगा दिमाग में. या जावा की स्ट्रीम तब तक ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी. देन यू विल सी. आई रियली वांट टू शो हाउ द रियल डेवलपर वर्क्स ना. अगर तुम लोगों ने उसका देखा होगा, क्या नाम था उसका, होममेड हीरो की सीरीज थी, आई थी बहुत पहले, ऑलमोस्ट डिकेड अगो, 2016 में. So he developed a game. He learned to develop a game on the stream and developed a game.
Not exactly learn, he was working at somewhere. Missing path variable exception. अब मेरे को कुछ खाने change you can say last year जून में 1 year डिले मिला 1 year डिले मिला और अभी हो तो जाएगा ज्वाइन बट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन दिस फंडामेंटल थिंग्स लाइक डीएस एंड अदर थिंग्स भाई ये मेरे अंदर चेंज आया है मतलब इंटरनल माइंड नाइस यार जब तक वो अंदर से नहीं आता ना तब तक वो नहीं होता चेंज यू कैन से लास्ट ईयर्स नाइस मतलब एक ही डीएस से प्लेलिस्ट उठाई है और एंड करने तक पर ही रुकूंगा उससे जैसे बहुत लोग वेग हो जाते हैं चीज़ों को लेकर या यस संकेत पाटील स्क्रीन साइज मोठा कर ओके स्क्रीन साइज मोठा करू इज इट नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन लेट मी चेक यू आर सेइंग फॉन्ट साइज मोठा कर नाउ इज इट विजिबल संकेत you missed a chat after Sanket Patil. It is sick. नहीं मैंने ये पढ़ा था ब्रदर सेम चीज़ मेरे ब्रदर के साथ हुआ था ही wanted to join BCA college but what family done my manipulating they put him into BA CBA from BCA मैंने तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो अभी यार बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है तुम्हारा दुख और दर्द ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है ये सब ये क्या एरर है रिक्वायर्ड URI टेम्पलेट वेरिएबल फॉर मेथड अच्छा उसमें URI टेम्पलेट मेथड ये प्रेजेंट नहीं है ऐसे बोल रहा है व्हाट द AI सेड या यस प्लीज गो अहेड अरे चल रहा है
पढ़ा मैंने ना अभी। तो तुम्हारे फैमिली का इश्यू चल रहा है, अब क्या बोलूँ मैं उसमें। वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन कॉलेज। आई थिंक कॉलेज में सब इतना लेट ही सिखाते हैं। थर्ड सेम में डीएस से कुछ 5-6 कोर सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, बाकी सिर्फ फिलर कंटेंट। देखो, कॉलेज जो है ना, इट्स लाइक अ डैम, यू नो। वो तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाएगा। जैसे डैम के दरवाजे होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो दरवाज़ा खोल के दे तुम्हें। उसके आगे पूरा समंदर है, पूरा पोटेंशियल है कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उसको आगे सीख सीख सकते हो, सीखना चाहते हो। कॉलेज तुम्हें पूरा इन डेप्थ सब कुछ सारे टॉपिक्स नहीं सिखा सकता कभी भी। हम्म, ये मेरे को नहीं समझा, वो तो मैंने भी किया था। रिक्वेस्ट मैपिंग एडाप्टर हैंडलर, इनवोक हैंडलर मेथड, रिक्वेस्ट मैपिंग हैंडलर। ये 1 मिनट दे देते हैं एआई के लिए, एआई को, और हम खाना खा लेते हैं। मिसिंग पाथ वेरिएबल किया था क्या मैंने? वैलिड आता दिया उसने यहाँ से। दैट्स इट। ओके, इट गिव अस दिस। हमने वो क्या, वो वैलिड लगा था, इसकी प्रॉब्लम आया था। अच्छा, वैलिड हटा दिया। ओके। वैलिड पाथ में मतलब पाथ वेरिएबल में वैलिड नहीं यूज कर सकते हम। तो उसने फिर से उसको स्ट्रिंग कोड कर दिया। तो फिर हम उधर से डिटेल नहीं ले सकते, ऐसा बोल रहा है। मैंने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया था फिर। ये डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई शुड डिलीट दिस फाइल। डिलीट कहाँ है? डिलीट, यस। इज नॉट रिक्वायर्ड। एक बार फिर से रिबिल्ड करते हैं। देन वी चेक अगेन। कैश पे आते। कॉलेज ने आज तक जो भी सिखाया है, सिखाया कुछ यूज में नहीं आया अभी तक। कॉलेज ने जो भी सिखाया वो अभी तक यूज में नहीं आया है। इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज एकदम अलग लेवल पे ही चलते हैं भाई। इफ यू नो, यू नो। लो ऐसा, ये ऊपर था। यस, नाउ इट मस्ट बी ऑडिबल। ठीक है, दिस वर्क। नाउ टू द कैशिंग। ये अपने को एआई कुछ सिखाना चाह रहा था, तो विल सी, अपन डिस्कशन में चले गए। इसने बोला बस एक कैश डॉट कंटेंट्स, तो ये कैश मेरे को ग्लोबली इसमें एक मैप क्रिएट करके रखना पड़ेगा, मैप ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड देन दिस लुक सिंपल। लो वॉइस, अभी वही वॉइस सही आएगा। सो अब मैं ब्लूप्रिंट बताता हूँ 6.5 मंथ्स का, थोड़ा 50+ गुड स्ट्रीम्स प्रोजेक्ट्स जेएस नॉलेज, मे बी रिएक्ट स्टार्ट। ओके भाई, आज एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया। कौन सा दिखा सकते हो? कैन वी सी इट? कैन यू शेयर द यूआरएल ब्रो? कॉलेज में क्या है असाइनमेंट्स? क्या है लिखा है? एलएमएस लेक्चर
देखो फोर्सफुली तब क्रेडिट्स मिलेंगे, होल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स। अच्छा, कॉलेज का है यार सिस्टम्स, अपने इंडिया में शेडी सिस्टम्स है सब ना। सोचो इतने शेडी सिस्टम्स के बाद इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकल रहे अपने इंडिया से, अगर सिस्टम्स अच्छे होते तो क्या हो जाता। रवि, अगर तुम यूआरएल दे सकते हो तो प्लीज़ डू शेयर। हम देखेंगे तुमने क्या डिप्लॉय किया। आई एट 2 महीने का शुगर इन 2 बाइट्स। आई एम बैक। कॉलेज में क्या ऐसा, ये तो मैंने पढ़ा। आई एम वेटिंग फॉर द रविराज reply कि if he can share his project link, then we can see it. Indian education system, like if they had to teach JavaScript in school, I think college end तक भी नहीं सिखा पाएंगे। ऐसा नहीं है, गिटअप पर है तुम्हारा गिटअप। तुमने बोला डिप्लॉय किया है तो हम क्या सोचेंगे, डिप्लॉय किया है तो कि लिंक होगा तुम्हारा कोड नेक्सस। लास्ट ईयर दिख रहा है, ये नहीं है। Repositories updated an hour ago. Inkrush. Inkrush, a real-time multiplayer drawing and guessing game inspired by Scribble. अच्छा, real-time drawing, room-based multiplayer, invite links, live oh okay। बताओ भाई, यूज करने के लिए हम तो बैठे हैं। एंटर निकनेम, क्या इंडी डेव नाम दे, इंडी डेव, और क्रिएट अ रूम। लेट्स क्रिएट अ रूम। रूम का कोड कहाँ है? Stand by, you are the host. Share the invite link with the friends. Copy link. ज्वाइन करो रवि, किसी को तो ज्वाइन करना पड़ेगा। आई कांट प्रोसीड। ये तुमने बनाया है, इट्स नाइस। स्टैंड बाय, यू आर द होस्ट, आई हैव शेयर्ड द लिंक एंड मे बी दिस इज द रूम कोड। आ जाओ अगर कोई ऑनलाइन है तो। वर्सल पे ये किया है कि तुमने, तब तक कोड देख लेते। क्लाइंट साइड पैकेज जेसन, वाइट और React used game screen JSX. So there is only one this screen, then there is a home screen. Okay, button join room, ये तो opening का है। बाकी कहाँ है? lobby.jsx, this is the lobby.jsx। okay,
और कुछ नहीं है। तुम्हारा गेम कहाँ है, क्या है फिर इसमें? अरे कुछ तो बताओ आगे। थॉरफिन। हाउ वी कैन प्ले? 3 players connected. Okay, Atharva is connected. How can I start the game? At least need at least 3 players. 2 players connected. One more, need one more player to start the game. कोई एक join कर लो यार. I have shared the link in the UI in the chat. I'm pasting it again. Atharva is here. अरे तुम तो join कर लो थॉरफिन. Look at the server. Server देख लो. तुम join करो तब तक पहले. I wanna try this. ये डिफॉल्ट कोड रखा ही हुआ है तुमने. मैक्स राउंड इंडेक्स यहाँ पे आ गए क्या? 3 player. 3. यस, स्टार्ट द गेम. अबे यार, स्टार्ट द गेम. यस. रवि चूजिंग अ वर्ड. ओके. डू नॉट लीव द लॉबी. ए रवि लेफ्ट द लॉबी. गेस द मोड. गेस मोड. अच्छा क्या है ये? टाइम रिमेनिंग फॉर व्हाट? अच्छा हिंट. अच्छा, दिस इज द वर्ड दैट वी हैव टू गेस. सो व्हाट इज दिस स्क्रीन फॉर? सो 1 2 3 4 5 6 7 8. Guess the word. File letter containing abled. क्या होगा? अच्छा यल. डबल एल. यू. चैट जीपीटी को पूछते. गेस दिस वर्ड. थिंकिंग थिंकिंग. अम्ब्रेला. बट ये कहाँ, कहाँ ये करना है मेरे को? अच्छा, वी आर डन देयर. मेरा नेट चला गया. मैं लेफ्ट हो गया. अभी भी वेटिंग टू स्टार्ट शो हो रहा है. इट स्टार्टेड ब्रो. एंड यू हैव चोजन सम वर्ड इट सीम्स. सो 3 का क्या होगा यहाँ पे? एनिमल. एनिमल. मेरे को सज कहाँ गेस करना है यहाँ पे? यहाँ क्या करना है मेरे को? ये चार्ट में करना है. हिंट रिवील्ड. इलिट. नो, नॉट इलिट. क्लास. CLASS. क्ले. व्हाट इज CLOEK? क्लॉक. अच्छा क्लॉक. ओके. सो नेक्स्ट
ड्रॉवर, टर्न ट्रांजिशन, चूज अ वर्ड। ओ वाह, तुम लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा तो क्या ही फायदा है। फिर से स्टार्ट करो। लेट्स रीस्टार्ट। कैसे बाहर पढ़ना है यहाँ से? IndieDev clear. Let me go back here. Okay, enter name. I'm creating one more time, okay, and create a room. This is a new link. अभी भी वेटिंग, अभी तो ज्वाइन कर लो, अब तो हो सकता है। अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ गेम इज वर्किंग बट यूआई इज डेंजरस ब्रदर, खतरनाक। अरे मतलब ये गेस द वर्ड है, जैसे स्क्रिबल में कैसे होता है, यू हैव टू ड्रॉ एंड सामने वाला गेस द वर्ड्स, हुएवर गेस द वर्ड फर्स्ट विंस। इट्स अ सिंपल, प्रीटी सिंपल लॉजिक, यू कैन ड्रॉ या नीड वन मोर प्लेयर, अथर्व या कोई और। रियल टाइम सिंक होगा या स्टार्ट द गेम। I can use this pen now. Get ready, choosing the word. Please don't. Who is choosing? Ravi is choosing the word. हाँ, then it's fine. When it's my turn. क्या है? Star. STAR. IndieDev guess the word. Okay, ये गेम मैंने खेला हुआ है पहले. Next drawer is IndieDev. So let me do it on the another screen. Okay, I have guessed the word. Like I have. ठीक है, now let me draw. Hmm. It's not what it looks like. Okay. Yeah, this is fun. Now it's Atharva's turn. Atharva is choosing a word. What is this? Hand? Acha, it's a big word. Country? Ice. Oh, yes, I guessed it. Yeah, this is nice. I'm bookmarking this. This is nice, bro. This is nice. Mm, okay, I guessed it. Up. So it's. इससे अच्छा मैं नहीं ड्रॉ कर सकता भाई. स्पेलिंग गलत हो गया इसका, अथर्व का. मस्त चीज बनाया रवि तुमने.
You are taking good advantage of AI. We have to come back to the project. Yeah, I guessed it. रवि खुद के बनाए हुए गेम में नहीं जीत पा रहा है भाई. सच अ शेम ब्रो. तुम लोगों को दिख गया तो क्या ही है. चलो कौन पहले ये करता है. I thought you saw the word, that's why I was drawing something else. सॉरी मैंने कंफ्यूज किया शुरुआत में. This is not set, this is set. अभिषेक, दिस इज नाइस यार. बहुत ही बढ़िया बना है, बस तुम अपने बनाए हुए गेम में नहीं जीत पा रहे हो. अच्छा, लेट मी गेस इट. या आई गेस्ड इट. भैया क्या गिट रेपो भी है इस प्रोजेक्ट का, जिससे हम भी अगर आपके साथ प्रोजेक्ट करें तो एज अ रेफरेंस यूज कर पाए. हाँ, यस यस यस. आई यूजुअली शेयर. स्टेट मैनेजमेंट करना है बस, रिडक्स यूज कर. हाँ, वही मैंने चेक किया तुम्हारे प्रोजेक्ट में ना. ये रिडक्स होता है तो ये चालू हो जाता है. अथर्व इज गॉन क्रेजी. चलो नाइस, आई एम क्लोजिंग दिस. बहुत ही बढ़िया बनाया है. सम पॉइंट्स टू यू. आई आई पोस्ट इट इन द डिस्कॉर्ड. क्या था तुम्हारा? इंक्रश. इंक्रश.
very entertaining game. Let me just a second. Add XP 5 member Thorfinn. GG GG bro GG. मस्त चीज़ बनाई है तुमने. Somebody was asking me about for the Git repo. Yeah, Abhishek, I am sharing you the Git repo. State management करना है. Long game. Long game हम entertain हो रहे थे इसलिए we were engaged ना. URL shortener. This is the one that I'm building. I'm sharing the link. Code wise it's not that big of a deal. बस ये अपने को एक बार बनाना था ताकि इंटरव्यू में कोई पूछे तो. इनफाइनाइट गेम है भाई, चलता ही जाएगा. आई नीड टू ऐड राउंड लिमिट्स और भी वर्ड्स ऐड करना. बहुत मज़ा आ रहा था उसमें. हाँ मैंने रेपो लिंक शेयर किया है अभिषेक. आई जस्ट शेयर द रेपो लिंक. All the repo links are already present on the Discord. If you are not on the Discord, you can join through the pinned comment. Pinned link. Link is for the Discord server. Else I have shared it in the chat. You can refer that. It's not a big project. I'll suggest you to look into the auth server, which was our last stream sessions ना. Almost कितने 10 streams किए हमने उस पे. कहाँ तक गया. दिस दिस इज़ अ वेरी अच्छा प्रोजेक्ट. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट JWT का JWT टोकन यू कैन use this. Somebody, one of the subscriber has छोटा मोटा contribution did in this. चैट पढ़ो सर. कहाँ पे चैट? कौन सा चैट? ओके भैया, गॉट इट. थैंक यू. नाइस. मैंने कंट्रीब्यूट किया है उसमें. यस 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 यस. रवि हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन दैट. ही हैज़ क्रिएटेड द बेस एंटिटी. आई थॉट कि लोगों को मज़ा आएगा कंट्रीब्यूट करने में, बट आई डेंट सी पीपल आर सो, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ थे हम. हाँ यस, इसको थे. तो हम विल इम्प्लीमेंट दिस. देवा, उठा ले रे बाबा. Fixed space issue from the stored URL while sending it to the front to the client. Yeah, commit and push. Commit anyway. अब ये रोएगा ना बहन का भाई. Git push. Password is password. कहाँ तक पढ़ा था मैंने चैट. मैंने यस. गेम से याद आया, GTA 5 परचेस करा था 2 साल पहले. अब लैपटॉप है बट गेम खेलने का मन नहीं. अभी तो तुम रोना धोना कर रहे थे कि यार मेरे कॉलेज का फीस का इश्यू और गेम GTA 5 खरीदा हुआ है तुमने. ग्रैंड थेफ्ट वाज माय फेवरेट सीरीज सिंस चाइल्डहुड बट नाउ DSA. अरे कोई पोकेमॉन फॉलोअर है क्या यहाँ पे? रेज्यूमे में डाल दूँ क्या ये हाँ हाँ भाई बिंदास डालो भाई. अरे जितना कुछ अभी तुम ये हो ना डालो रेज्यूमे में डालो. मस्त मस्त सा प्रोजेक्ट है ये.
GTA 5 ऑनलाइन खेलने में मज़ा आता बट मेरे पे नहीं है, नहीं तो अपन खेलते। GTA मेरे पास मैकबुक है भाई, मेरा और गेम का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। मेरे को भी चाहिए था, मन था कि मैं अभी गेम प्ले स्टेशन वगैरह ले सकता हूँ, लेकिन क्या खेलूँ मैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी गली क्रिकेट खेलने में गई है। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। हाँ भाई, पोकेमॉन का गेम आ रहा है ना। हाँ यस, गेम भी आ रहा है। और तुम लोग पोकेमॉन कार्ड्स वगैरह पे कुछ देखते हो कि कलेक्टिंग द पोकेमॉन कार्ड्स? I keep ordering some packets of Pokemon cards to open. 900 रुपीज़ का था उस टाइम पे, 10 पास करा था। अच्छा अच्छा, 900 रुपये मेरे को लगा महंगा, क्योंकि गेम्स तो महंगे होते हैं ना। भैया PS ले लो और फिर मुझे गिफ्ट कर देना। ठीक है भाई, ठीक है, कर देंगे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को PS वगैरह खेलना भी नहीं आता भाई। मेरे को कोई बस क्रिकेट बैट दे दो, मेरा काम हो जाएगा, या बॉल दे दो, मैं अच्छा बॉलिंग डालता हूँ, पूरा दिन में बॉलिंग डाल सकता हूँ। द 1 मिलियन कार्ड हूँ, वो तो एकदम बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो इंडिया में तो आएगा भी नहीं वैसे कार्ड्स। अगर मेरा पैकेज आता है तो मैं ऑन स्ट्रीम में उसको ओपन करूंगा, देखते हैं। किसी को पसंद है तो। ओके, नाउ डू आई हैव टू क्रिएट अ सर्विस फॉर दिस? सो डू आई हैव टू क्रिएट a cache service for your one stream? No, keep it inside the service. Okay, it's saying just this. And okay, अब ये लॉजिक हम इसका देखते नहीं, हम थोड़ा दिमाग लगाते, नहीं हुआ तो अपन देखते उसका। तो व्हाट इट्स सेइंग कि यहाँ पे जाओ, डीबगर हट जा भाई, मेरे को लाल लाल इतना अच्छा नहीं लगता देखना। तो इट्स सेड टू अस जस्ट क्रिएट दिस, ओके, मैप, concurrent map of string. देवा, या हैव सीन पोकर, या मैंने पढ़ा है ये शायद। आई वॉज थिंकिंग टू स्ट्रीम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर इंस्टाग्राम पे स्ट्रीम कैसा, और ट्विच तो इंडिया में चलता नहीं। डज एनी वन यूज ट्विच बाय एनी चांस? तो अपने को चाहिए कहाँ, गेट में चाहिए, तो सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाउ द गेट कॉल का ये चाहिए अपने को कि ओरिजिनल यूआरएल और शॉर्ट कोड। तो जब भी whenever we get a short code, we'll check in the cache. Right now what we are doing, we are fetching it from the repository. This shouldn't be the case, so we should first uh, check the cache, and if it's not present in cache, then else below code should run. Okay, so we have to again store it, no? uh, if this, so then if else before this, uh, cache dot put, या पुट जो अपन ने वहाँ पे यूज़ किया था, लीड कोड में बहुत सारा पुट मैप्स यूज़ किया हुआ है अपन ने, कैश पे पुट करेंगे, ठीक है। अगर इफ कैश डॉट गेट गेट और short code, agar if we find this, what is crying, why is crying? uh, अच्छा, कंटेंट्स की यूज करना है अपने को, नॉट गेट, इट्स अ मैप, कंटेंट्स की, देन return cache dot get this. Okay, else it will do
it's work. So this is it, I guess. So let's run this. Yeah, yeah, stop and rerun. Yeah, 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 bro. Uh, yeah, I have seen Pokemon करना अनबॉक्स यस इंडिया में गेमर्स यूज़ करने ट्विच मोस्टली ओके आज मैंने बहुत मैसेजेस कर दिए इतने टाइम इतने क्या अरे मेरा क्या तुम लिख रहे हो या तो मैं हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ आज मैंने बहुत मैसेजेस कर दिए इतने लेस टाइम में 425 एक्सपी हो गया इट्स ओके ब्रो इट्स ओके इट्स ओके यू हैड डाउट्स यू क्लियर इट हमेशा चाहिए कोई ना कोई पता है इफ आई हैड समवन whom आई कैन टेक सम एडवाइस मतलब जिसने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी थी मैं उससे अगर पूछ सकता आज भी पूछ सकता हूँ तो आई अगेन गो एंड आस्क 100 क्वेश्चंस आई नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी नो प्रॉब्लम अथर्व आई विल बी ऑलवेज हियर अपने को टेस्ट करना है तो ये टेस्ट कैसे पता चलेगा अपने को आई हैव टू ऐड इट इन डिबगर मोड बट लेट्स सी यहाँ पे ये टाइम तो दिखाएगा ना अपने को डज इट शो द टाइम सो या फर्स्ट कॉल फ्रॉम द database and now cache see this is too fast I'm fast see this is time you can see 6 milliseconds okay let's see first 8 millisecond and now see 7 milliseconds 1 millisecond का change now see 3 millisecond so थोड़ा सा फर्क है अपना असो शिट 12 मिलीसेकंड ओ अभी इतना कम टाइम है तो इतना ज़्यादा अपन डेटा उससे इन्फर नहीं कर सकते बट या अभी मॉडरेटर सर होते ना चिल्ला देते फर्स्ट मॉडरेटर पता नहीं यार कहाँ कहाँ बिजी है शायद वो दिल्ली जाके आया मेरे को पक्का लग रहा है ही फाउंड समवन ही फाउंड अ गर्ल और उसके साथ अपना चालू है उसका अच्छा हुआ हेलो अभिषेक वेलकम टू द डिस्कॉर्ड looks like moderator found a girl in Delhi. उसका थीम्स दिखा रहा नाइस वन यार ये थोड़ी ना अपने को इम्प्लीमेंट करना था अपने को असली माल इम्प्लीमेंट करना है ये चल भाई तू थोड़ा जा कि local hash map used as cache here जाने क्यों लोग प्यार करते हैं see we can see the command query that it's passing select star from this so if I do and do this again send did it hey let me test this in a debugger mode before I am passing because I'm not sure कि it's really checking it from the cache here so debug mode uh, if cache contains this okay let's see one more time short code cache should be empty okay so let's step over yeah cache is empty so first time cache empty रहेगा ठीक है now we are putting it in the cache so cache has this now key is 1 and value is this perfecto now in the second attempt we should get some value so let's step over yeah we found something and the second call is coming from the cache so this is how cache work basically it's the simplest form of cache okay so this shit is working let me push this and now back to the original mal
that I have to do. Hey, everything is up to date. Commit anyway, bro. Commit and push. ए इंटेलिजेंट चूते आईडी है भाई, मेरे को तो लगा मतलब बहुत ही गंदा आईडी लगा जितने मैंने यूज़ किए। विजुअल स्टूडियो, वीएस कोड, एंटी ग्रेविटी, इक्लिप्स तो अच्छा था। चूते है ये इंटेलिजेंट, जस्ट लाइक द जावा कम्युनिटी। लास्ट ईयर व्हेन इट वाज लास्ट ईयर व्हेन इट वाज जून, आई वाज इन फ्रेंडशिप ट्रायंगल, उधर से ब्रेकअप हुआ। देन आई रियलाइज्ड हाउ लाइफ स्लैप्स यू। Change was going on before that. After 4 days, I got the guts to say their truths. Okay, लाइफ में तो बकचोदी होती है भाई। ट्रू, एक्चुअली ट्रू। On their faces, and after that, I'm alone, not lonely. I feel a different type of thing inside myself, like five characters in one person, own friend and केयरटेकर। ओ भाई बहुत डीप जा रहे हो। गिटहब को पायलट का बिलिंग मॉडल चेंज हुआ है। हाँ हाँ हाँ, चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। नाउ देर इज अ डिफरेंस। आई कैन एक्सप्लेन यू दैट इफ़ यू वांट, बट तुम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है। कंपनीज के लिए तो इट्स अ बड़ा चेंज है। लाइक आई वॉज ऑल इन विद देम एट द टाइम। दिन का 70% उनको हैपन्स ब्रो। ये सब एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में जितने जल्दी हो। नीरज के ट्रू भाई, ट्रू क्या मतलब? उसके एक्सपीरियंस ट्रू बोल रहे हो या मैंने जो गाली दी इंटेलिजे को उसको ट्रू बोल रहे हो? हाँ, 18 ईयर ओल्ड बाय द, यस। भैया फर्स्ट टाइम आपके चैनल में आया आया हूँ। एक ओवरव्यू दे सकते हैं आप क्या करते हैं, और आपने स्प्रिंग बूट कहाँ से सीखा है, सीखना स्टार्ट किया है? आई लव बैकएंड। ओ दैट्स नाइस, आई विल टेल यू। जावा फुल स्टैक स्प्रिंग बूट के लिए भी। हाँ यार, सच में। तो अभिषेक ब्रो, I started like streaming when I started on the Java, like learning when I started the learning journey for the Java. Basically, I'm a front-end developer. I do front-end का work and sometimes deployment का work और थोड़ा बहुत back-end का work in my job. My profile, although is a full stack, but mostly I'm on the front-end side. So that's why I wanted to get into this back-end thing. आई वर्क लिटिल बिट ऑन नोड जेएस, थोड़ा सा डॉट नेट पे काम किया था, बट जावा का मार्केट बहुत बड़ा है। सो आई वांट टू गेट इनटू जावा, एंड बिग प्रोडक्ट कंपनीज के राउंड्स वगैरह में जावा gives you an upper hand. So that's why I chose Java. Not much, I didn't give much of a thought for it, but I started with Java, and ऑनलाइन लेक्चर्स देख के मेरे पास मेरे कॉलेज के टीचर का जावा का ये था, एक मैंने को सेशन किया हुआ था, कोर्स था छोटा सा। उसमें जावा के लेक्चर्स रिकॉर्डेड थे। सो आई अगेन रिविजिटेड दोज लेक्चर एंड सीधा आई स्टार्टेड कोडिंग। I was doing lead code for first few days because I wasn't aware or friendly with the Java syntaxes. So I streamed almost 50. I did 50 streams of lead code and almost 25 lead code streams before I started on the actual Java Spring Boot and Angular ka project. So I did one stream of 10 streams. जावा स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर। सो आफ्टर दैट आई मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। सो आई एम डूइंग दिस। सो माई goal is to learn and extend my job boundaries. Currently I'm seen I seen as a I've seen as a like I'm being seen as mostly the front end guy, but I don't want that in the future. So I'm doing this shitty things now. uh, इंटेलिजे की गाली, अच्छा। somebody agreed। मैं पबजी खेला करता था उस टाइम, मैं भी बहुत पबजी खेलता था। यस यस, जहाँ जब इस भाई का हार्ट ब्रेक हो रहा था तब। तो अरफिन भाई, यू 18 ईयर ओल्ड? अरे नहीं, वो तुम्हें तुम्हें बोल रहा है। वो भी ऑलमोस्ट उसी एज का है, 18 19 20 का ही है ये। विच कंपनी ब्रदर? फ्रंट एंड ऑन रिएक्ट। रिएक्ट में भी किया है मैंने कुछ टाइम तक, बट अभी मैं कुछ 3 1 सालों से एंगुलर पे कर रहा हूँ। So my company is, you can check my LinkedIn profile. You can check my LinkedIn profile, bro. My manager has strictly said not to mention anything about the company, so I don't want to take any kind of risk. You know, होने तो कुछ नहीं वाला, but क्यों ही मैं ये करूँ? So,
So this is my LinkedIn profile. If you want to see it, you can check it. देवा ऐक मैंने आज लीड कोड में वीडियो रिकॉर्ड के टाइम वीएस कोड समझ के कोड लिख दिया था. बड़ा ही फनी था. ओके ओके कूल ब्रो. या बट वीडियो आएगा विदाउट एडिट्स. या डू शेयर विद अस. टू शेयर विद अस. ओके नाउ यार मेरे को एक्चुअल रेडिस ये करना है, तो मेरे को चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा बहन के भाई मेरे को बता कि दिस इज डन इन लाइक 2 minutes. That's what she said. So I want to implement the actual Redis cache here. मैनेजर को बोल दूंगा तेरे ये स्विच मारने वाला है, इसको रिलीज मत करना. भाई मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ अभी. वैसे मैनेजर को पता चल गया नहीं चल गया. आई हैव क्रिएटेड पैसिव इनकम सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट, ऑटो इन्वेस्टमेंट, ये सब को मैंने कर रखा है, तो मेरे को इतना डर नहीं लगता हूँ अभी. आदित्य भारद्वाज, ऑल द बेस्ट ब्रो. थैंक यू ब्रो. एकदम ही आगे तुम और ऑल द बेस्ट बोल रहे हो यार. थैंक यू सो मच ब्रदर. वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे ऑल द गाइज हु शोड अप टुडे. नीरज, आदित्य, अभिषेक, न्यू गाइज, वेलकम टू द स्ट्रीम. वेलकम टू द डिस्कॉर्ड सर्वर. भाई हाउ टू गेट इनटू एन इंटर्नशिप गाइड दे दो ना. करंटली इन 4 अच्छा 4th सेकेंड लास्ट सेम. ओके इंटर्नशिप तो यार मेरे को पता नहीं. मैं तो कॉलेज से ही इंटर्नशिप मांग के जाता था. टीपीओ में टीपीओ से लिया था मैंने इंटर्नशिप. टीपीओ इज़ रियली हेल्पफुल. भाई यार रनिंग वार्निंग जाओ, जिम में जाओ 2 मिनट. भाई मैं तुम्हें मेरे को देख के लगता है मैं जिम नहीं कर रहा हूँ. हे वन थिंग आई फॉरगॉट नाउ ऑन डिस्कॉर्ड. क्या मैं वो बेसिक से दिखने वाला ओनली एचटीएमएल प्रोजेक्ट शेयर करूँ जिसमें अपने मन का सीएसएस डाला है विदाउट वॉचिंग टू. हाँ हाँ डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है. तुम डालो, हम देखेंगे. हम देखेंगे. ओ अच्छा, आई ऑल्सो डू लाइव स्ट्रीम्स. अरे थॉरफिन तुम यहाँ भी आदित्य हरि कुमार, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. हाउ टू गेट इंटर्नशिप. आई एम अबाउट टू एंटर 3rd ईयर. यार मेरे को इंटर्नशिप करे हुए बहुत ज़माना हो गया, तो मेरे टाइम पे इंटर्नशाला वगैरह बहुत ज़्यादा चलता था. अब पता नहीं इंटर्नशाला अभी चलता है नहीं चलता है. और कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क लिंक्डइन के थ्रू तुम कोल्ड ईमेलिंग करो, मैसेजेस करो, उसके थ्रू भी तुम्हें मिल जाता है इंटर्नशिप. नहीं यार अभी आया बस. ओ आदित्य भारद्वाज, कैन वी सी हिज चैनल. इज दिस योर स्ट्रीमिंग चैनल ब्रो. लेट मी सी. दिस इज यू. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रहोगे, रोज करोगे तो फायदा है. ठीक है, अगर तुम गैप दो. $150 DSA challenge. Problem number 17, letter combinations of a phone number.
तुम भी जावा में ही कर रहे हो क्या? नाइस. Somebody is from the same link. That's nice. बढ़िया यार. I'll watch your channel off stream एक बार. इंटर्नशिप का सच में मेरे को इतना आइडिया नहीं है. although we have I have taken some interviews for interns. Raw review please. एकदम rough. भैया is good at DSAS. I'll see. I'll check him ना. अथर्व. Okay. Links to other pages. ये यूट्यूबर का फोटो डाला तुमने. अच्छा है भाई. Surfing. Do you guys know I am a surfer as well? I do different kind of surfing, water activities. I'm a scuba diver and a surfer. हर साल एक बार पैर तुड़वा लेता हूँ सर्फिंग करके. यूआई तो क्रेजी है. हाँ नाइस यार, बहुत ही अच्छा बनाया तुमने. विदाउट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन और ये तुमने अच्छा बनाया हुआ है. नाइस यार. दिस इज नाइस ब्रो. गुड. गुड ब्रो गुड. आदित्य भारद्वाज नाम है ना उसका. यस. आई कीप इट एज अ बुक मार्क्ड. UI crazy. Buttons are working. Return to home buttons. Yeah. etc. फीफा देखते हो क्या सर? मैं मेरे दोस्त देखते कुछ तो मैं उनके साथ जाता हूँ. और क्लब वब के भी मैचेस देखते. क्लब का तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता बट या फीफा इस बार देखूंगा अच्छे से. आई गेस चालू भी हो गया मेरे ख्याल से तो. या रेडिस नाउ यू नीड 4 थिंग्स एट दिस डिपेंडेंसी. स्प्रिंग बूट रेडिस. ठीक है. मेरा माउस भी हगने लग गया. लेट्स सी स्प्रिंग इनिशियलाइजर में क्या है डिपेंडेंसी. रेडिस. Redis search and query database. Spring data reactive. Redis Spring session. Spring data access drives. Redis chat memory repository. Which one is suggesting to use? Data Redis. Spring Boot starter data Redis. Okay, not sure. Let's add this dependency. Uh, what else? ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को 3:30 AM. ओके. हाय ब्रो, आई एम बैक. या हेलो आदित्य. यार तुम्हारा चैनल तो बहुत बढ़िया है. तुम अच्छे से डीएसए वगैरह मस्त पेल के कर रहे हो. यू आर वेरी गुड इन डीएसए. तुम व्हाट्स योर बैकग्राउंड ब्रदर आदित्य? वेयर डू यू वर्क राइट नाउ और आर यू अ कॉलेज स्टूडेंट? I am Aditya, 2025 computer science graduate, currently working as a software engineer at MNC. I live stream daily DSA study sessions to build consistency and improve my problem solving skills. Okay, you are a very recent graduate. This channel is for anyone preparing for coding interviews or trying to get better. Yeah, understood.
Since I can see since day 104 it changed. Nice, यार. I can learn something from here. Uh, I'm still learning, so my pace might be slow. एक बार पूरा DSA खत्म हो जाएगा फिर पेस बढ़ा लूँगा. मेरा भी सेम सिचुएशन है. आई एम डूइंग द फर्स्ट इटरेशन एंड फर्स्ट इटरेशन में आई एम फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट्स rather than the this. नेमार नेमार ने खेल रहा आज. नेमार अच्छा. डोंट वांट डिस्क्लोज द कंपनी नाउ. या सेम सेम. कंपनी डिस्क्लोज करना मुश्किल हो जाता है. But it's a well-known MNC, better than TCS, Infosys, ETC in brand name. Okay, okay, yeah, okay. Yeah, dependency ये कर दिया. Run Redis locally. So अपने को Docker लगने वाला है क्या इसके लिए? uh, let's see, क्योंकि अपने को कुछ पता नहीं है तो इसका क्या बोलते हैं अपने को चैट जीपीटी को ही फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम. एंड ही इज सेइंग run this docker run Redis URL shortener Redis. Docker cannot because Docker desktop is not open. So let's open the Docker desktop. Don't wanna okay, but आज हम नॉर्दर्न पेनिनसुला में है. I'm going to sleep now. You guys enjoy. Yeah. Thank you so much, bro. Unable to find image. We need to. अच्छा. ये डिपेंडेंसी ऐड नहीं हुआ. So I mean. Okay. It worked. It installed the dependency. Okay, we got the image ID, latest image. Okay. Now what, ChatGPT? Now what? Use the Redis in service. Uh, बियर ग्रिल्स का जोक मेरे को नहीं समझ में आया. बियर्ड. What it's saying now. हमें भी सिखा दो ये साइड इनकम बनाना. भाई मैंने 3-4 साल बहुत ग्राइंड किया हुआ है भाई. आई हैव लाइक जैसे लोग यहाँ पे जाते थे ना. तुमने अगर यू आर फ्रॉम पुणे यू मस्ट नो कि यहाँ पे यूपीएससी एमपीएससी प्रिपेयर करने लोग लाइब्रेरी में जाते हैं ना, बैठते पढ़ाई करते. तो मैं वहाँ जाके बैठ के वीडियोस बनाता था. वीडियोस बना के चैनल बनाया. एक चैनल पूरा शॉर्ट से. मे बी आई माई चैनल वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट मोनेटाइज्ड बेस्ड ऑन दी शॉर्ट्स बिकॉज फॉर शॉर्ट्स यू नीड 1 crore views in 3 months. So I fulfilled that condition and I got monetized. So वो चैनल धीरे धीरे बड़ा होता गया, नेटवर्क बढ़ता गया उसका. सो उससे भी आता है. देन इन्वेस्टमेंट वगैरह. आई हैव देर इज़ अ बुक विच आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम. क्या नाम है यार उसका? 4 hour वर्क वीक. 4 hour वर्क वीक. इट सिंपली सेज कि तुम्हें ऐसी सिस्टम्स बनाने हैं अपने आजू बाजू में. ट्राई टू ऑटोमेट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ टिल द पॉइंट कि यू डोंट हैव टू डू मच ऑफ वर्क. नाउ जो मेरा चैनल है दूसरा वो पूरा ऑटोमेशन पे चलता है. मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए. इट वर्क्स लाइक बटर नाउ. बट एट वन पॉइंट आई यूज टू वर्क 18 hours a day ऑलमोस्ट. मतलब पूरा दिन ही उस पर मैं बैठ के काम करता था. I have like Python scripts running on that. उस पर एक वीडियो बनाना, I can make it like in 2 minutes एक वीडियो.
तो आई हैव दैट लेवल ऑफ ऑटोमेशन देयर. बाकी मेरे फाइनेंसेस भी मोस्टली ऑटोमेटेड है. आई हैव लाइक टू अच्छे एडवाइजर्स, मतलब वो भी नेटवर्क से ही मिला हुआ है मेरे को. आई हैव गुड नेटवर्क इन दैट, सो दे मैनेज माई मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वगैरह. तो जब भी मेरे को कुछ करना होता है तो वी टेक समटाइम्स इन अ वीक कॉल, 5-10 मिनट का, एंड दैट्स इट. तो मेरे को इन्वेस्टमेंट का इतना नहीं सोचना, क्योंकि देखो फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंसेस एक बार सॉर्ट हो गया ना कि तुम बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चालू कर सकते हो. तुम्हारे फाइनेंसेस ही डिस्टॉर्टेड है एंड देन यू कैन नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स. फिर वो चैनल का भी सॉर्टेड है, देन और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी तुम्हें ऑटोमेट करके रखना पड़ता है. इस किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि देर आर सम मिलेनियर्स बिलेनियर्स हु इवन outsource the clothes shopping as well. Like there are specific kind of a fashion designer people in their network. They shop for them. मतलब कौन से कपड़े उनके लिए अच्छे लगेंगे, all those things, and they do that. So तो उनका टाइम उसमें भी नहीं जाता. So they just have to open their closet, wear the good clothes, what the fashion designer is suggesting, and move on. So दिमाग अपना जो अपना मेन गोल है उस पर फोकस रहना चाहिए, कि जितना ज़्यादा तुम उस पर फोकस्ड हो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें आउटसोर्स करना है. सो बिल्ड लाइफ इन दैट वे. लर्न स्किल्स पढ़ो भाई, क्योंकि ये 20s पढ़ने के लिए है. जोक नहीं, जस्ट देख रहा था किसको किसको याद है बंदा. हाँ सबको ही याद है. आपका कोई और चैनल? हाँ हाँ एक चैनल है, वो कॉपी पेस्ट कंटेंट वाला चैनल है वो, उसमें मैं कुछ ऐसे बात नहीं करता. इट वॉज अ कॉपी पेस्ट चैनल. वो बहुत एक टाइम था कि फेसलेस चैनल बनाओ ये बनाओ, उस पर बहुत चल रहा था वो, तब बनाया था मैंने. दिस इज माई 8th or 9th चैनल. आई फेल्ड मल्टीपल टाइम्स. आई हैव फेल्ड मोर times than anybody has even tried. Okay, what it's saying, uh, use Redis in service. Redis template. शायद बोर कर दिया मैंने. मेरे को ये सब चीज़ें नहीं बात करनी चाहिए स्ट्रीम पे, अनरिलेटेड. शॉर्ट यूआरएल सर्विस रिपोजिटरी क्या है ये? यूज रेडिस इन सर्विस. Then get original this cache key URL short code string cache OPS for value if cached short URL find by short code. ये अपने को पढ़ने के लिए मांगता है यार डॉक्यूमेंटेशन ना. ऐसे मेरे को मन नहीं करता है करने का. रेडिस कैश कुछ तो होगा इसका डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए. मैं ये रेडिट समझ रहा था कि यार रेडिट का क्यों थ्रेड आ रहा है सबसे ऊपर. ये सब चीज़ें मत करो. टीचर्स हाउ टू मेक साइड इनकम बहुत ही मुश्किल है, और इंडिया में ना पैसे कमाना ये सिस्टम्स इतने मुश्किल बना के रखे नहीं. इवन दो तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, पता है मेरा आरपीएम $3 का था. इंडिया में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है. these systems and all they have like extorting the hell out of India. यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया. हम लोग पता है इंडियंस लोग उनके लिए वी आर लाइक पेनीज, एंड्स की तरह. मतलब कुछ फ़ायदा नहीं उनका. मतलब हम बस अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है वही फ़ायदा है उनके लिए. तो दे हैव लाइक गिवन अस लीस्ट ऑफ द लीस्ट रेवेन्यूज, लीस्ट ऑफ द लिस्ट आरपीएम्स. इवन मतलब मेरे को नहीं लगता कोई इंडिया में यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पैसे कमा के मतलब चल रहा है उसका दुकान. नहीं चल सकता इंडिया में. भुवन बम वगैरह ये बहुत ही पॉपुलर, एक आध वीडियो से 3-4 लाख बहुत हो गया कमाते होंगे, इससे ऊपर कोई नहीं कमाता. जो भी तुम्हें बता रहा है ना कि एक बार चैनल बन जाए, ये हो जाए मोनेटाइज हो जाए सब सॉर्ट, नहीं इंडिया में ये हो ही नहीं सकता भाई. फिर तुम क्या बोलते हैं, तुम जैसे जैसे आगे जाओगे यू विल ट्राई टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द वीडियोज, एंड व्हाट
प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या लगता है, यू नीड मनी, यू स्टार्ट टू इन्वेस्ट द मनी, देन सडनली तुम्हारा प्रॉफिट कट हो जाता है, बिकॉज रेवेन्यू इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होता जितना प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज होने से होता है. तो यू विल नेवर सी कि बहुत ही खतरनाक प्रोडक्शन क्वालिटी इंडिया में कोई बना रहा है. नहीं, ऐसे ये नहीं हो सकता इंडिया में. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और आई शुड स्टार्ट इंस्टाग्राम और समथिंग समथिंग, थिंक ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग कि तुम्हें सच में वो करना है क्या, या बस पैसों के लिए करना है. पैसों के लिए करना है तो मत करो, क्योंकि वो तो होने वाला नहीं है. वो होगा भी तो बहुत रेयरली रेयरली वो होगा. मेरा भी एक चैनल 5 ईयर से ज़्यादा ओल्ड गेमिंग वाला, उसको लीव कर दिया. अच्छा चल रहा था. अगर सीरियस बनता तो जस्ट रॉ वीडियोस डाल देता था कभी कभी, एडिट से एक वीडियो पे 18. अब उस पे अराउंड 160 सबसे, बट नॉट गोइंग देयर. एग्री टू या या ये सब अपनी को इंडिया में, बाहर अगर तुम लोग कभी बाहर गए हो इंडिया के बाहर, तुम्हें पता चलेगा अपनी क्या वैल्यू. ये कलर देख के अपना सारे सिस्टम्स अपने अगेंस्ट है इंडिया में, इंडिया के बाहर सब, हर जगह. बस अपना देश बहुत बड़ा है इसलिए अपने को कभी लगा नहीं कि बाहर क्या है अपने अपने बारे में, लेकिन वी आर जस्ट, एवरीबडी इज जस्ट डिस्गस्टेड बाय अस. Run Redis on develop with Redis open source vector database streams, real-time context engine, Java JDIS, Java latest, Redis CLI, develop with Redis. uh, यात्री, डॉक्टर, पैसेंजर, परमवीर. हाँ हाँ, यस यस यस, आई नो दिस गाइज. मतलब यूट्यूब चैनल पता है, यस दे आर वेरी पॉपुलर ना. Let's implement what it's giving to us. It said पहले एक string redis template ये बना लो बोल रहा है. तो let's see अपना सर्विस कहाँ है, एक्सेप्शन ये सब. URL service, stop the server, and then we set this private string template. uh, string template है क्या अभी ये redis string template? I go. Is a JPA repository database. From where do I have to import it? Redis core. Redis core. One file committed, local hash map used as this. What's the problem? Failed to execute. Variable Redis cache is not. Don't want to this, but
लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है? Cannot result Redis symbol. I think I need something more. Dep- I guess there's some missing dependency. Add this. I have added this. I have added this, buddy. अब क्या प्रॉब्लम है अभी भी? com URL shortener snapshot. Dependency is there. I don't know what's the problem is now. Why so, bro? It's there already, you know. Spring Boot started data. How to resolve this in your IDE? Look at the right hand sidebar of your editor and click on the Maven tab. Uh, Click the reload all Maven projects icon, the circular double arrow. तो किया हुआ है यार. Oh, okay, it worked. Private Redis template. अब इसको use भी करना है अपने को. So let's see how it's saying to use public short URL service. अच्छा, ये अपने को इसमें ऐड करना है. Do we have a constructor over here? We don't have a constructor over here. So let's add a constructor. इसके नीचे constructor ऐड करना पड़ेगा अपने को. So here we'll add double shift tab constructor with both. Yeah. And then what's next? Uh, it's saying cache key it is creating, and then cache ops value dot get. Okay, there are the syntaxes that we should know, it seems. So currently we have cached over here only for this method, तो इसको अपने को replace करना है. तो we'll do cache key and cache URL Redis template ops for value or dot key. I also have automation workflow. मैंने workshops लिए थे after 10th class. Nice. You know SAS and SMMA agency. I don't know. 12 की वर्कशॉप्स होती थी उसको दिन में. अच्छा, ओके.
Okay, let's complete this fucking thing now. It's not worth that much of time. Cache URL, Redis template ops, get cache key. If cache URL presents, then if cache URL is not null, then return this cache URL. Okay, this is this hash map is not required. We'll remove this. And then how to add in the cache in the Redis template set. Redis template dot ops for value operation ops for value set cache key. Yes, this is not required. Okay, so I guess this is it. Let's try and rerun this. Let's see if it works. Simple Redis cache application. Guys, whoever is new, please do like this. So let's run it in the OS. तबीयत यार, ये एंटी ग्रेविटी इधर कब काहे आ गया? Hmm. Now let's run it in the debug mode because we wanna see is it really coming from the cache. Okay, so this URL entity, this not this, and this. Okay, so let's see if it's really coming from the cache now. Okay, this time it should come from the cache directly. Uh, Cache key is URL1. Okay, and then what happened? It takes so much of time. Cache URL is okay. We have the cached URL, and yeah, it should return. So return 27 because I was debugging, hence 27.25 seconds. ओके, सो ये आपने को कहीं कोई और प्रोजेक्ट में बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा. सो इफ आई do this, there shouldn't be any cache. Okay, so let's see, because it's a new value. mm, Cache is null, yeah, as expected. Yeah, and yeah, yes, yeah, this was simple, pretty simple, not so fancy. I have to create the React application for this simple short URL now. So should I quickly create a React application? I hope I have set up for React because React करके मेरे को बहुत साल हो गए. Let's create the React app now. पूरा ख़त्म ही कर देते हैं इसको, आज Saturday night है तो. URL shortener front end. So in the front end, open the terminal. Uh, open the terminal. ये बहुत ही चूतिया है मैकबुक, भैंचोद. इतना गंदा ओएस इतनी बड़ी कंपनी का कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं समझ में आया आज तक. सो रिएक्ट क्रिएट ऐप, यही कमांड होता है अगर मेरे को याद है तो. लेकिन आई वांट जेसन, आई वांट एस सी एस एस एंड टी एस एक्स, नॉट द जे एस एक्स. सो URL
URL shortener API. uh, I want now I'll create React app. So give me, I don't want white or anything, just plain React application. So give me command to create React app with TSX and SCSS, not CSS. So it's TypeScript on something TSX hyphen TSX something, if I correct. Template React TS. It's paste this command. नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट। ये वाइट का डिफ़ॉल्ट आ गया है मेरे ख्याल से इसमें ना, 4 साल पहले तो कुछ नहीं था ऐसे। हाँ यस यस, npm यस। आई ग देवा सर्दी। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm। फ्रंट एंड ऐप भी बना ही लेते हैं ना क्विकली, छोटा सा एक। तो आज के स्ट्रीम में कि पैसे नहीं थे और घूमने लोग सपोर्ट नहीं करते थे, तो भाई उस टाइम एक क्लाइंट भी आ गया था मेरे फ्रेंड के भैया। ओके, कैमरा कंपनी कोलकाता, द डील was 40 rupees, 40,000 rupees, but we didn't go the chances because the subscription, if you don't have the money and people at home don't support. Yeah, after that when I left I realized own money will give freedom, first focus on own. Yeah, so React application is running. जादू है कोई जादू मेरे मन में यूं छाने लगा. Now let's open the React folder here. Open folder. Coding, not lead code today. So Java frontend UI shortener. Yeah, open. Open buddy. Open जल्दी जल्दी open. Assets. ठीक है, ये सब नहीं चाहिए अपने को, हीरो पीएनजी और ये सब. गेट स्टार्टेड. ये वाइट वाइट क्या बकचोदी किया यार, मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी है. strict mode is fine. app.tsx css no. So npm install कहाँ गया, npm install sass. terminal. npm install sass. और ये क्या है ये, ओके. ये बाद में नहीं चेंज करने देता मेरे ख्याल से ना. नाक बंद होती जा रही है यार मेरी.
कहाँ था ये, इंस्टॉल एस सी एस एस देन बैश यूआरएल शॉर्टनर npm इंस्टॉल इंपोर्ट स्टाइल इंपोर्ट ग्लोबल css। अरे एआई है ना अपने पास, एआई को बोलते हैं कि भैंचो दिए अपना आई वांट टू use SCSS in this project, so make the alignments। ये कर देगा अपने लिए, ये सब चीज़ों में नहीं टाइम वेस्ट करेंगे हम। ये काउंट यूज स्टेट कहाँ से रह गया। रिएक्ट में मज़ा आता है थोड़ा सा ना। ये वाइट एसवीजी, ये वो निकल बहन के लोड़े निकल, या मूव टू ट्रैश। व्हाट एल्स डू वी हैव, फेव आइकन, और ये अच्छा वो उसके लिए है यहाँ पे जो दिख रहा है उसके लिए। हाँ चलना, कहाँ तेरे को यूज़ करना है, हट। और क्या था, हाँ चल चला। या ऑलवेज अलाउ अलाउ अलाउ, ऑलवेज अलाउ ब्रो। फ्रंट एंड में जल्दी जल्दी बना के दे भाई, मेरे को बैक एंड पे फोकस करना है, फ्रंट एंड पे नहीं। इसका हम तब तक पुश कर देते हैं। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में भी चेंज्ड, वी एडेड दिस फॉर द रेडिस। फॉर्म में वी नीडेड ओनली दिस डिपेंडेंसी फॉर रेडिस। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस एंड सर्विस में कुछ ज़्यादा नहीं करना था अपेरेंटली अपने को, बस ये स्ट्रिंग रेडिस टेम्पलेट, ये कुछ इसका सिंटेक्स है दैट वी डिडंट नो। इसको डिपेंडेंसी ऐड किया अपन ने, कंस्ट्रक्टर में डाला एंड देन जस्ट add a cache key URL, key and value pair, just like a hash map how we did it, and then store it once. There is nothing, so yeah, this this is nice. Okay, and this is nice. So okay, so we'll push these changes. uh, Added Redis, इसको क्या चाहिए अभी, हो गया है सक्सेसफुली डिड दिस, या ही हैज डिलीटेड दिस। आई सक्सेसफुल, या वर्क्स, इज इट वर्किंग, या इट्स वर्किंग। Redis caching for the get API URL, so before pushing always check if your code is really working। यार अरे अभी यार मैंने यार सर्वर बंद कर दिया बहन चोद। Next, yeah, it gave the URL, yeah, that's fine. So I never use 302 in the front end side, so I really wanna see how it will work। या commit and push, हाँ रे कर भाई, कर तू, मैं हूँ तू कर, अबे कर ना, अब ये तू नहीं लेता मेरे को पता है, तू फेल हो जाएगा। इंटेलिजे की इतनी औकात ही नहीं है कि वो ये कर पाए, टर्मिनल से ही अपना काम चलता है, क्योंकि अपना पासवर्ड ही ऐसा है ना, तू ले ही नहीं सकता उसको। योर स्मॉल एस IDE विल नॉट बी एबल टू हैंडल माई पासवर्ड। कोड चेंज, हाँ चल बाप को मत सिखा। ठीक है, दिस इज दिस, सो सेटअप setup for the front end React एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन में हमने एंगुलर यूज़ किया था ऑथेंटिकेशन वाले में, बट रिएक्ट हमने बहुत बहुत जन्मों से यूज़ नहीं किया, तो लेट्स यूज़ द रिएक्ट दिस टाइम, बिकॉज वाई नॉट। ठीक है, सर्वर इज स्टॉप्ड, या बिकॉज माई स्टूपिड एस stop the server, so where is this dev white। Yeah, so what we want for the front end, let's think for a minute। कहाँ गया अपना ब्राउज़र, Excalidraw। So for the front end, I don't think we want anything, we just want
इनपुट फील्ड बुक में क्या दिया है? Fuck the book. So we want original URL, and then button यहाँ पे will just say short URL, and यहाँ पे will see short URL, only one page. चलो भाई, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। मैं इसको ख़त्म ही करके जाऊँगा। सो या, गुड नाइट गाइस। Before leaving, anybody, if you have left to like the stream, then please do like the stream, yaar. I'm going to create such kind of projects again and again, and also do solve the lead code. So if you are really interested in this kind of shit, then please do consider liking the stream. Okay. Yeah. So now assets में कुछ नहीं यहाँ पे, app tsx. So we'll create a folder and we'll name it as pages as a standard, and in this pages we'll create, क्या नाम दे उसको, कि home page नाम दे, home dot tsx. ओके। अब अपन ने रिएक्ट यूज़ करके हो गए 4-5 साल, तो हम ज़्यादा करके इसको ही बोलेंगे एआई को कि तुम ही करके दो हमें। कॉल बैक फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे क्या? सो नो, आरंट वी यूजिंग दिस सिंटेक्स एनी मोर? कॉन्स्ट होम होम कंपोनेंट, और जस्ट होम, होम इज़ फाइन। एंड प्रॉप्स पास करते थे हम इसमें, और क्या नाम दे, आई होम प्रॉप्स करके नाम देते हैं हम इसको, और इंटरफेस बना के रखते हैं। हालांकि अपने को लगेगा नहीं है, बट स्टिल पब्लिक इंटरफेस आई प्रॉप्स होम्स, ये पब्लिक और ये इसमें नहीं चलता मेरे ख्याल से, बिकॉज इट्स नॉट अ क्लास बेस्ड. So interface, export interface, it's a function based export interface. And then what we need here, we need we need two states maybe, const uh, original URL set original URL is equal to react dot use state, और इसको ये कर देते हैं हम, क्या है इसका, ऐड इंपोर्ट, ठीक है। और एक सिमिलर अपने को चाहिए शॉर्ट कोड, शॉर्ट URL set set short URL, and you set this same again. Okay. Then let me ask it to create a UI for me. So I can give it this screenshot कि भाई मेरे को ये UI, a simple UI, uh, I want a simple single page UI for the URL shortener. So please make me one, and do use React material UI for buttons and input fields. हम UI नहीं बनाएंगे, अपना फोकस जावा है. Who's discording now? I Shrivi,
What the fuck is this name? I Shriv, whatever, bro. Welcome to the stream and welcome to the Discord. Hey, there is no pinned link, and how did you understood that this is the Discord server? There's no pinned link today. Is there? Or maybe there is. Maybe there is. There is one more feature that I have. Start a poll. Mm, yes. Okay. ब्रो ये ऐप TSX में क्यों तुमने ये किया ब्रदर ब्रदर आई वांटेड this in the home page file. Should I copy? Hmm. URL shortener, short URL. Okay, ठीक है. This is fine UI, but ये गलत पेज में है तो let it fix and then we'll. येड लागलग येड लागलग रंगल तुझ्यात येड लागलग असं कस्तुरीच. ठीक है. Let's. Props ची काही गरज नाही आहे. We actually don't want props right now. Elevation what it has used. So we need to do the API call handle short URL service. Okay. So not in this one. We need to. Oh shit. मैंने क्या click कर दिया? Did my stream ended? I mistakenly clicked on end. Yeah, I hope not. Yeah, it's not. Okay, now use effect. Uh, okay, and in this use effect, we need. There is no this, no. This is class-based component HTTP. मैं 4 साल बाद ये कर रहा हूँ यार. React यूज कर रहा हूँ. कैसे कॉल करते थे? API कॉल HTTP. How to Axios. Yeah. So I need Axios. So const Axios ऐसे ही था ना. Let me Google how to make API call in React. Fetch is a way. हाँ. So we'll not use this. We'll not use this. So we'll use like const uh, data. Let's and then const data, but we can have like await fetch and URL. So we have to post this, and after posting it gives us the URL.
So we'll use this directly, and we need a proxy file now. So we'll use localhost for now, and then there's no one is watching. तो फ्रंट एंड हम पूरा एआई से बनाएंगे, बिकॉज बैक एंड वी आर wrote it by our hands. Hmm? We need a proxy file. Proxy file to call the localhost APIs. Hmm. Okay. Copy object. So here we'll go, and inside here we'll create a folder request, and one more is like response.
So response is of type new file, uh, I API response, I API success, success response dot ts. Okay, so copy this name, copy, I export interface, I API response, and in this one paste this object that I copied. Okay, and then let's change this to, this will be boolean because this is how we have set it. This is a string, message is of type string, and payload is of type this export interface I uh, payload top 1% integer. Hello bro, welcome to the stream. So I payload, then this one, this, because I like to keep things neat and clean code wise, so that's why all this things. So I payload, format document, we should name it as I, what was the call, I short URL payload. uh, what was the API name though? It was get original, no, get shorten URL payload. So I short URL payload. ठीक है, I shorten URL payload. Okay, so we need to use this. Hey bro, I said hey, how are you? How's everything? How's life going? I'm about to end the project. I just wanted to have the front end ready, so within 15 minutes I'll make the front end ready so that my whole end-to-end flow will be completed. Uh, const content short URL data. So response is of type I API response, add import, and response is missing in the maybe it's response of type this. I'm using literally writing React after years, 4 years. uh, if response, क्यों ये थाक रहा है? The response is missing in the, acha, there is something new. I'm Spring Boot dev too. Oh nice yaar. I'm just learning. I just started the Spring Boot. I'm a front-end developer, but I'm learning Spring Boot now. I just created this URL shortener simple basics along with the Redis cache because it's a system design question that's been asked frequently. Uh, so it's saying यार ये मैं React में Angular में तो बहुत आसानी से करता था. It's type response. What is this response type? So this should be of type response. Response is not generic, it's saying.
Okay, response is type response, and this is okay. And content, data dot await dot. This is of type this, not I API success response, and then set short URL is data dot payload dot short URL, or data dot payload dot short URL. There is no all these things required though. This has become simple. Okay, so yeah, it worked. Motivator, I'm back. Light was gone. Okay. I'm Spring Boot Dev. Great, great. Are you working? Yeah, yeah, I'm a working professional. I have like almost 5 years of experience now. And what about you? How many years of experience do you have? Top 1% engineer. And what's your real name? Shubham. It's your real name, I'm guessing. Hello, Shubham. Welcome to the Discord. Okay, short URL is set over here. And then if I click on this, so there should be a get call. So if I click on the short URL, then there should be the get call now, and it will respond in 302. I am fresher. Yeah, it's Shubham. Yeah, I saw your Discord. Acha, you are a fresher, but you said you are a Spring Boot dev, so you are working somewhere or you are finding the job. 26 grad. Oh, अच्छा, you are just recently, मतलब अभी एकदम fresh हो तुम. You are a fresh cream now. You are like the OG AI developers generation, no? So have you got the job or what's the current status? Job मिला या क्या है? Searching for the job. Okay, there are many people in the community who are searching for the job. Hey, somebody click no, I'm gay. What the fuck, bro? I just added this. I should add this in the beginning of the stream. How many views we have crossed? Almost 150. That's nice. I have updated the UI for this. So let's click on this. Did it make any API call? HTTP short URL. So we need a safe browser because HTTP is not allowed in the HTTPS in the Chrome. So what should I do to test this? HTTP is not allowed in the Chrome. So how can I test this? Because in the response location uh, it will give us the URL. So that's how we want. यार आज ही तबीयत खराब होनी थी. This is what we want. uh, Example domain, and in the type localhost. So delete, yeah, delete, delete, delete. Yeah, still it didn't make any call.
The goat is here. रेस्ट ले लो आज, आई वुड से। हाँ, मेरे को इतना ख़त्म करके, क्योंकि आई आई डोंट वांट टू डेडिकेट वन मोर स्ट्रीम फॉर दिस छोटा सा थिंग विच इज़ लेफ्ट। दैट्स आई टुक एआई का हेल्प जल्दी जल्दी। फ्रंट एंड में ज़्यादा मेरे को कुछ करना नहीं था। व्हाई इट्स एन इशू? मीत, आर यू इन द स्ट्रीम? यूआरएल शॉर्टनर के पीछे इतनी चीज़ें होती है, कितने डेज हो गए इस पे वर्क करते हुए? अरे तीसरा, इट्स द थर्ड स्ट्रीम ब्रो। इट्स द थर्ड स्ट्रीम। पहला स्ट्रीम तो अपना क्विक था, क्योंकि आई हैड टू गो टू ऑफिस द नेक्स्ट डे। आई सॉल्व लीड कोड ऑन ये। हाँ, अगर पूरा अच्छे प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब मैं जब भी बनाता हूँ तो थोड़ा ठीक ठाक ही बनाता हूँ, तो टाइम लगता ही है, 2-3 दिन। सी, ये दिमाग में घुस गया ना। अभी अभी कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा, क्योंकि आई नो फॉर श्योर इफ आई स्टार्ट माई इंटरव्यूज ना, somebody will for sure will ask this question, ये कि डिजाइनर सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये रेडी यूआरएल शॉर्टनर का सिस्टम डिजाइन करो। तो मैं ऐसे ततुल पुतुल एकदम पूरा बोल दूंगा भाई, सब कुछ। बस ये अभी चल जाए तो मैं मस्त सोऊंगा। आ, ये नहीं चलता यार, ऐसे डिलीट करने से थोड़ी ना चलेगा। डिडंट वर्क, गिव मी अनदर अप्रोच। डिडंट वर्क, give me another approach, or I could use git pages, deploy it quickly and use the, oh, too much too much of a hassle। मेरे को बस एक यूआरएल शॉर्ट करके जाना है, डिस्कॉर्ड। lol needs me। shut up, I'm more of a hey, this is the moderator bro, you can't escape from this guy। hop on to the stream, meet। The front end generates the link using the same, when you click in the when your Java backend responds white, this is completely bypasses by Chrome redirection restrictions about HTTP, because the browser never actually navigates to port 80 directly. Important. So how can I make it work now? I don't think it will work because there are restrictions in the. Can you share the PDF in the Discord? Yeah, it's already there. If you can access the older chats, there is this link, system design ka. It's a famous book। गुड नाइट मीत, सो जाओ, आए क्यों हो फिर? Restart your front end server because white conveyor running the React app won't pick the new proxy rules। Okay, kill the server, ये इसमें चलता नहीं है ना। npm package npm run script। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। कॉर्स इश्यू में भी नहीं, नहीं कॉर्स इश्यू तो आई सॉल्व। कॉर्स नहीं है रे, ये क्या है ना कि क्रोम में एच अभी अपना यूआरएल क्या है देखो। सी, इट्स अ शॉर्ट। अच्छा, एक सेकेंड,
शॉर्ट यूआरएल कहाँ, लोकल होस्ट मेरे को देना था यार यहाँ से। मैंने वो रखा था कि मैं वो फालतू डोमेन लेके कर दूंगा। हम्म, हैरान हूँ मैं जीने के लिए, सोचा ही नहीं कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के। यार मैं भी ना, क्या बकचोदी, क्या चूतियापा। रंग उतारने होंगे। तो लगता है जैसे कोई रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। क्या जुगाड़ूपना है, नाराज हूँ मैं। mm, we'll just short this, yeah, HTTP. Now let's see. It worked. मैं गधे की तरह वो शॉर्ट टेम्पररी मैंने दे के रखा था। सो आई वांट सी, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस, let's paste this here, go to inspect, let's see the network call, and let's run this. Yeah, it did redirection because it didn't show the network tab now. पुराने because it got redirected. It's a 302 and 302 में it has a location response header, and in that response header there was a link, the original link. So that's why we couldn't see it. So if it could have been, is there any way? No, there is no way because it happens very quickly. We can't see it. But yeah, it's working, and that's what I wanted. So yeah, maybe can I take the Discord, any other URL? Uh, Maybe this documentation ka URL, Redis caching. I'll go here. I'll just paste this short URL and go this A A A। मैंने ये क्या पेस्ट किया यहाँ पे, लोकल होस्ट 505 पेस्ट किया मैंने। या इट वर्क वेरी फास्ट, रेडिस एंड ऑल, मस्त मस्त सा अपना एकदम प्रोजेक्ट बन गया। कैन सिस्टम डिज़ाइन भी स्टडीड डायरेक्टली, सिस्टम डिज़ाइन डायरेक्टली पढ़ा जा सकता है। आजकल सिस्टम डिज़ाइन सुनने में बहुत आता है लिंक्डइन पे, डोंट नो अबाउट। एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा पूछते हैं, फ्रेशर को इतना नहीं पूछते। थोड़ा बहुत अगर बहुत ही अच्छी कंपनी है अमेजोन वगैरह तो पूछते, नहीं तो नॉर्मली इतना नहीं पूछते। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन दी तुम्हारा ये बेसिक्स। सो या मेड दी end to end flow work. I'm done. Good night and fuck off. Yeah, it worked. So let me take this good screenshot, add to my documentation please.
I'll say create me a simple GitHub readme with this screenshot and add it. Okay, let me paste it on the Discord as well so that uh, URL Shortener project is done along with the Redis caching. I hope some interviewer ask me this system design question now. For metrics, very fast. या टाइम सीरीज db भी ऐड कर दो. अभी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से. वेरी फास्ट फॉर मैट्रिक्स. ओके, हाँ मैंने क्लिक का तो एनीवेज ऐड कर रखा है. ऐड कर देते हैं उसको भी. ऑफ स्ट्रीम कर दूंगा अब मैं उसको ना. ऑफ स्ट्रीम करके डाल दूंगा मैं उसको. आई हैव कम्प्लीटली री रिटर्न रीड मी. लेट्स सी. एडेड रीड मी. माउस डिस्चार्ज हो गया है मेरा. माउस भी बोल रहा है सो जा बहन के भाई. So let's go to GitHub. GitHub. देवा. Hey, did you push the readme? अच्छा, it's the readme inside. ठीक है, नो इश्यूज. चलो बाकी जो मैट्रिक्स वगैरह मैं डाल दूंगा बाद में क्योंकि क्लिक काउंट भी चाहिए. ग्रेट प्रोजेक्ट. आई विल ट्राई टू मेक इट आल्सो. मैनली स्लीप या. अगर तुम बनाओगे ना तो एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना है इसके बुक में से ना. इट्स एलेक्स यूज सिस्टम डिज़ाइन बुक. इट्स अ वेरी गुड बुक दैट आई हैव. मतलब मेरे को तो लगा, अल्दो मेरे को ये भी लगा कि इन्होंने वाई दे डिडंट मेंशन द यूसेज ऑफ कैशिंग इन दिस यूआरएल शॉर्टनर एग्जांपल, बट या इट्स फाइन. Both 301 302 redirection they have explained it, and it's a very nice short simple crispy explanation. So do follow this if you are gonna try. And there is a GitHub repo that uh, you can follow me on GitHub, and you can watch for the projects that I'll be making on this stream. So before this I have made this indie auth starter because I started the Spring Boot first time. So this is my first project that I created. So backend is in Spring Boot. It's a simple JWT token with the refresh token implementation, and the front end is in the Angular. So you can look at it. This is my GitHub profile. You guys can follow, or like wanna look into any project, then yeah, you can. So I guess I should now end the stream. And Atharva, you are there since the first message, first minute. So really appreciate that. And keep working hard, keep grinding, and keep growing, guys. I'll be back with the lead code questions again. So जिसने भी like नहीं किया, please do like the stream so that it will, my streams and videos will come to your feeds disturbing you again and again, and try to get into your head. If you still like those streams, then do subscribe to the channel next time, not now. You don't have to subscribe to the channel now. बाकी तो चलो कोई नहीं. आई डेंट सी कि तुम लोगों ने इतना एंजॉय किया है इसको, यूआरएल शॉर्टनर को. 3 स्ट्रीम लगे अपने को, 3 स्ट्रीम में फिनिश इट. बट इट वॉज अ गुड लर्निंग ऑल टुगेदर.
यू विल नो, जब तुम्हें को भी कभी कोई इसमें पूछेगा ना इंटरव्यू में, तब तुम्हें याद आएगा कि एक बंदा था यूट्यूब पे, उसने बनाया था यूआरएल शॉर्टनर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। श्री साई ब्रो। यार अभी आए तुम। ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो। आई जस्ट फिनिश्ड इट। I just finished it, and it's working end to end. So even though I don't have any domain registered, but it's just a local host, it's working. I may get one for this one. Maybe use GitHub Pages, a free hosting. Good night, yeah, good night, good night. Good night, Shri Sai. Can I see your progress, Shri Sai? Let me see your progress. I'm really curious about your progress, no? Lead code profile, yeah, this is the one. 287. 57.99 acceptance, 287 motherfucker, 5 submissions. First unique event element, find champion fizzbuzz। भाई तुमने सोचा है कि तुम्हें गूगल ही निकालना है, अभी कोई बीच में नहीं चाहिए तुम्हें। या थैंक्स ब्रो, अप्रिशिएट इट। ये पीछे वॉल पे टाइम टेबल है क्या? कल भी देखा था। नहीं, इट्स अ नोट्स रिटन फॉर मी माई सेल्फ, द थिंग्स दैट आई वांट। Not that product today. Appreciate. Not that product today. Product or productive? अच्छा, not that productive today you are saying. भाई दोस्त 287 करके भी तुम productive नहीं हो। Then what the fuck is productive for you, bro? Rotting oranges you did 8 days ago. Good, good, good. चलो, बाय बाय यार, बाय बाय गाइस। जिसने भी लाइक नहीं किया यार, प्लीज लाइक कर दो स्ट्रीम को। I see very less likes today. Yeah, not a productive. Yeah, it's productive, bro. Any good news, bro? Any interview scheduled or something? Shisai, I really want you to get into some company as soon as possible. I'm routing for you. Okay, chalo. It's time then. I'm not seeing any responses now. So yeah, it was a good stream, and we have completed this URL simple sa URL shortener project, but it was a very good learning curve. So yeah, good night. See you soon. Bye bye guys. Take care. Good night.